We have who have for the first technical session, I am inviting Professor Kaushal Kishore, Dean Education, Central University South Bihar, and the session will be chaired by Professor Vinay Kumar, Dean Humanities, Magadh University, South Bihar. I am inviting both esteemed guests on the dais. Please, sir. I'll be there. I'll know. I am inviting Dr. Ziaullah Anwar, Urdu Department, to felicitate our esteemed speaker of this session with memento, khada, and replica. Now, I am inviting Professor Bharat Kumar, Department of Hindi, for the felicitation of chairperson of this session, Professor Vinay Kumar, Dean Hindi Department, Humanities. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce our first esteemed resource person, Professor Kaushal Kishore, for today's technical session 1 on research ethics and project writing. Professor Kaushal Kishore is a renowned expert in the field of research ethics and project writing and has a wealth of experience in teaching and consulting on this topic. Professor Kaushal Kishore is presently serving as Dean, School of Education, Central University of South Bihar, Gaya. He is former head, Department of Teacher Education, Central University South Bihar. He has also served as the Chief Proctor of the University for around 5 years. He is the coordinator of National Resource Center for Education, established under Pandit Madan Mohan Malviya scheme. This center has already developed 2 MOOCs for teacher educators and successfully conducted them through SWAM platform under Arpit scheme of Ministry of Education. He has more than 18 years of experience of teaching and guiding research at various levels. He has also delivered more than 150 invited lectures or talks at various institutions. 3 books, 1 authored, 1 edited, and 1 translated, and more than 40 research papers and articles published in various international and national journals are in credit. His publications bear Google Scholar citation, H-index, and item index. In addition to his teaching and research assignments, he has served his present and previous institutions in various administrative capacities. He is member of
editorial board and review boards of various academic journals. Presently, he is regional secretary and member of National Executive of Indian Association of Teacher Education, and oldest teacher educators and oldest and leading professional body of teacher educators in India. As a resource person, Professor Kaushal Kishore brings a depth of knowledge and experience that will enable us to deepen our understanding of research, ethics, and project writing and its practical application. We are fortunate to have him with us today to share his insights, answer our questions, and help us navigate the complex world of research ethics and project writing. Let us all give a warm welcome to Professor Kaushal Kishore and look forward to a stimulating and informative session ahead. Please, sir, kindly grace us with your knowledge. उनके ऑडियो वीडियो भी देखिए इसका लगने वाला मामला लगी हुई है सबने लेक्चर देने के लिए नहीं हुआ यहाँ से आप चलिए मतलब मैं तो साथ में आना चाहता हूँ तो कम से कम बिट्टू ऑर्डर्स मत फोकस लाइट डाउन लाइट डाउन लाइट की जरूरत नहीं है थोड़ा कम है टीचर एजुकेटर को जरूरत होती है ऑनलाइन वालों को इसकी वजह से सुनाई पड़ता है देखिए सर आधे घंटे की सभी को प्रणाम करता हूँ कोई फॉर्मेलिटी में नहीं करता क्योंकि मगध विश्वविद्यालय मेरा अपना विश्वविद्यालय है हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और मगध यूनिवर्सिटी को अलग अलग माइक सेट ऑर्डर्स ही दोनों बहुत ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर सर इस यूनिवर्सिटी के साथ एकेडमिक सिम्बायोसिस में है थोड़ा उधर रिजवान जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम करता हूँ नमस्ते नमस्ते जो यूनिवर्सिटी में अभी जो एक वाइब्रेंसी महसूस हो रही है पिछले कुछ समय से जब से नए कुलपति महोदय ने ज्वाइन किया है मेरी शुभकामनाएं साधुवाद इन एब्सेंसिया प्रोफेसर शाही वाइस चांसलर डीन ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर विनय जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शैलेंद्र जी और पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट और जुड़े हुए आसपास के कॉलेजेस के इतने सारे लोग जाने पहचाने सब लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम कुछ हम जो बात हमको करनी है वो है बेसिकली मामला रिसर्च प्रोजेक्ट राइटिंग और जब राइटिंग हम ईमानदारी से करेंगे तो ऑटोमेटिकली एथिक्स का ख्याल आए लेकिन मैं कुछ बात कहूँ उससे पहले आप यहाँ थे जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो लोग भी उनके पास अगर कुछ प्रश्न है पहले वो शेयर करिए आप यहाँ वर्कशॉप में जुड़े हैं तो निश्चित है कुछ जानना चाहते हैं सर्टिफिकेट के लिए नहीं आए ना सिर्फ कुछ जानना चाहते हैं तो जो प्रश्न आपके दिमाग में है वहां से शुरू करें अदरवाइज हम सब एक ही लेवल पर है ना मुझे आपसे ज्यादा मेरे पास कुछ बताने के लिए आप कुछ कहें तो मैं उस पर म्यूचुअल डिस्कशन करके हम कुछ निकालने की कोशिश करें कोई प्रश्न जो आपके दिमाग में आते हो प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल राइटिंग के लिए या रिसर्च की रिपोर्ट प्रपोजल राइटिंग से लेके आप कोई नई रिसर्च शुरू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड या एथिक्स का ख्याल कैसे कुछ भी जो प्रश्न आपके दिमाग में क्विकली एक दो प्रश्न कुछ ऑनलाइन भी लोग बोल देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे ये प्रश्न सबको मिल जाएंगे ना जी यहाँ से ले आप टाइप कर दीजिए अगर ऑनलाइन वाले लोग तो मुझको प्रश्न मिल जाएंगे तब तक यहाँ से कुछ प्रश्न होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट टाइम मामला है कितने मिनट है सब मेरे पास चलेंगे सर आप बोलिए जो टाइम हमारी वजह से लूज हुआ है आप नहीं आपके शेड्यूल के हिसाब से हमारे 45 मिनट्स 45 मिनट्स देखिए जितना एक मिनट कीमती है जितना गंवाते जाएंगे वहां निकलता है
माइक दे दीजिए उधर। सरपंच जी 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 पूछिए। पूछिए पूछिए। I'm from SMSD College, Chennai. My name is Sarvan Bhattacharya. I'm professor of English there. The confusion we sometimes come across is how to size, what to choose, which system to choose. MLA is standard for Languages. languages, but whether it's MLA 7 or 8 or 9, ओके और गुड नेम बंदोबस्त। और प्रश्न मेरा भी है जी प्लीज। ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम में चूंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की संभावना बहुत कम रहती है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च हम कम करते हैं, बट स्टिल जो नए सिनेरियो में रिसर्च के आयाम बदल रहे हैं, सोशल यूटिलिटी पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। तो ह्यूमैनिटीज के लिए आपका क्या सजेशन होगा कि हम कैसे अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करें कि हमारी रिसर्च रेलिवेंट भी हो, लेकिन वो अपने क्लासिकल जो उसका स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, उसको बनाए रखें। अच्छा प्रश्न करेंगे। ठीक और प्लीज। जी कौन से एजेंसी हैं जहाँ हम भेज करके वहाँ पर अपना बेनिफिट ले सकते हैं, अर्निंग करवा सकते हैं। और जी प्लीज। Good morning, everyone. So my name is Dr. Shweta Shah from Magadh University, Patna. My question is that what are the key factors that we should keep in mind while drafting our research proposal? उधर ही दोनों। हाँ जी और I'm so sorry for online participants. Actually, I didn't have that idea. Online participants are there और मैं कुछ उनके लिए PPT वगैरह लेता आता, हालांकि PPT restriction ज्यादा देता है। Okay, तो हम शुरू करेंगे। Yes, please. One sub question है, my research topic is mass media in picture of social studies and its impact of academic achievement at secondary level a school in Gaya district. इसका हम प्रोपोजल के लिए क्या-क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएबल, हाइपोथेसिस। Okay, एक बार फिर से बोलिए आपका टॉपिक। टॉपिक है सर यूज ऑफ मास मीडिया इन टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट एट सेकेंडरी लेवल स्कूल इन गया डिस्ट्रिक्ट। क्या शुभ नाम है आपका? योगेश प्रसाद, सर चतुर्वेदी के साथ। योगेश जी बैठ जाइए, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। और कोई बीच बीच में आप कुछ बताते रहिएगा, रोकते रहिएगा मुझे, जो कोई बात है। योगेश जी आज पूछ रहे थे कैसे वेरिएबल्स लें, हम कौन सी चीजें लें, ये सब बात हुए बिना टॉपिक कैसे डिसाइड हुआ? उल्टा चल गया कहीं मामला। ये इसी से हम बात शुरू करते हैं। हमने पहले टॉपिक पकड़ लिया, एजुकेशन वाले लोग भी हैं, टीचर एजुकेशन है, बीएड के बारे में जो लोग जानते हो, वहाँ एक लेसन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट चलता है ना। हम लेसन प्लान बनाते हैं और फिर पढ़ाते हैं बच्चों के साथ। अगर बीएड करने वाले बच्चों से आप पूछिए टीचिंग के दौरान, तो उनको पूछिए कि सबसे खराब चीज आपको क्या लगती है, कहते हैं लेसन प्लान। बड़ी दिक्कत होती है लेसन प्लान जाके पढ़ाना, उसको रखना, उसको पढ़ाना, बड़ी दिक्कत होती है। आप सोचिए कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है पूरे टीचर एजुकेशन की, वो उनको सबसे खराब लगती है। तो मतलब है कि चीज, और कोई चीज आप प्लान वे में करना चाहें तो अच्छी चीज है, खराब चीज है। कोई भी काम करने से पहले आप प्लानिंग करें, फिर उसको करें तो अच्छा होगा, या अनप्लान वे में करेंगे तो अच्छा होगा। आप टीचिंग के लिए प्लान वे में जा रहे हैं, लेकिन उसका असर उल्टा हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट को कहीं समझने में गड़बड़ होगी। होता क्या है कि हम ये कहते हैं बच्चों को कि कल तुम जब जैसे पढ़ाओगे क्लास में, तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक है, सिलेबस चल रहा है, क्लास चल रही है, एक टॉपिक है, मान लीजिए कल तुमको पढ़ाना है टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस के प्रकार पढ़ाना है कल तुमको जाके क्लास में। तो तुम ये सोचो कि ये बात करने के लिए बच्चे आसपास उनकी लाइफ से क्या एग्जांपल ले सकते हो।
क्या जोड़ सकते हो, कैसे बात शुरू करोगे। चश्मा दिखा दोगे अपना लेंस के लिए, या कोई हैंड लेंस ले जाओगे साथ में, तो पहले से तैयारी कर लो, है ना। हैंड लेंस भी अगर ले जाना, क्योंकि सडनली तो वहां मिलेगा ना हैंड लेंस, और आप चश्मा नहीं लगाते हो तो दूसरे का चश्मा कहाँ से, विद्यार्थी का थोड़ी करवाएंगे, वो चश्मा दे दो काट के। कुछ भी जो आपको तैयारी करनी है वो पहले से प्लान कर लो, और फिर जैसे आपने सोचा है उसको लिख दो कॉपी, वो आपका लेसन प्लान है, और उसको भूल जाओ, और फिर आपने जैसे सोचा है ऐसा ही पढ़ाओ। आप समझ रहे हैं, ये एक्चुअल प्रक्रिया है। होता क्या है बच्चों में, वो लेसन प्लान बाजार में छिपे छपाए मिल जाते हैं या सीनियर से मिल जाता है बाहर, तो दूसरे का लेसन प्लान उस टॉपिक पे बना हुआ अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, फिर उसको रटते हैं। ये एकेडमिक वॉमिटिंग है। जल साहब प्रणाम आपको, प्रोफेसर झाला आगे। ये एकेडमिक वॉमिटिंग है। हम जैसे हम खाते ना, कुछ खा लें, अपच हो जाए, उसको निकाल दें। मैंने रात भर बैठ के उस लेसन प्लान को रटा, और अब मैं जाके क्लास में बच्चों के सामने फोड़ देता हूँ। टीचिंग नहीं है, हम लेसन प्लान पढ़ाने लगते, बच्चे लेसन प्लान पढ़ाने लगते। लेसन प्लान नहीं पढ़ाना था, पढ़ाना था कंटेंट, उसके लिए प्लानिंग करनी थी, और पढ़ाना था उसी प्लानिंग के हिसाब से। हो गया उल्टा, एक दूसरे की प्लानिंग मुझको मिल गई है, उसको मैंने जबरदस्ती अपने जूते में किया, और मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। यही मामला रिसर्च के साथ भी है, जो वहां से शुरू हुआ। सर ने जो कहा, अगर मैंने पहले टॉपिक फिक्स कर लिया है, और फिर मैं ढूंढता कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, फिर वेरिएबल्स क्या हैं, तो मामला उल्टा शुरू होगा। तो यहाँ से शुरू नहीं होना था। वहीं से हम बात शुरू करें कि रिसर्च, जो उन्होंने मैडम शाह ने भी पूछा, की फैक्टर्स क्या हैं जो प्रोजेक्ट बनाते समय या किसी चीज को ध्यान करते समय करें। मैं कुछ बातें कैसे रिसर्च शुरू होती है वो बात आपसे करता हूँ, फिर धीरे धीरे आपके सबके क्वेश्चन उसमें शामिल करता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट है। चाहे आप फिजिक्स की रिसर्च की बात करते हो, चाहे एजुकेशन की रिसर्च की बात करते हो, चाहे फिलोसफी की रिसर्च की बात करते हो, मामला सिर्फ इतना सा है कि ह्यूमन बीइंग्स क्यूरियस है बाय नेचर। हम सब मनुष्य, हमको बुद्धि ज्यादा दी है ईश्वर ने, हमारी एक्टिव है, ज्यादा कम पास अभी पता नहीं किसके पास कितने निकले, लेकिन हमारे पास जो बुद्धि है वो एक्टिव है। हमको क्यूरियोसिटी होती है, चीजों में हम प्रश्न खड़े करते हैं, हम जिज्ञासा रखते हैं जान, और ये जिज्ञासा ऑब्वियस है, नेचुरल फिनोमेना। होता क्या है कि हम यहाँ एजुकेशन वाले जानते हैं, लोग एजुकेशन में नाम, शायद नाम प्याजे, प्याजे जी, प्याजे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लर्निंग में यूज करते हैं कि कोई बच्चा कैसे सीखता है या कोई भी व्यक्ति कैसे सीखता है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, साम्यिक, असाम्यिक, साम्यिक। कहना क्या है इसमें, उसकी बात का मतलब क्या है कि कोई भी चीज इस दुनिया में इक्विलिब्रियम के स्टेटस में रहती है। मैं अभी एक बॉल लूं, लुढ़का दूं, वो लुढ़कती नहीं रह सकती जब तक आप उसमें फोर्स ना लगाए रहे, वो रुक जाएगी। पेंडुलम आप देखते हैं घड़ी का, या कोई भी सरल लोलक जिसको आप कहते हैं, ऐसे झुलाइए तो चलते चलते एक जगह आकर रुक जाए। जो रुक जाना सामने इक्विलिब्रियम के स्टेट में। पानी आप हिला दीजिए, कुछ देर हिलेगा, फिर ठहर जाए। सामने में कोई भी चीज इस दुनिया में सामने में होना चाहिए, असाम्य में डिसइक्विलिब्रियम के फेज में नहीं रह सकती। एनर्जी लूज होगी और वो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी। तो इज विद नॉलेज, अजय कहते हैं कि नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ, व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वो साम्य की अवस्था में, आपके पास, मनुष्य के पास भी जो ज्ञान है वो साम्य की अवस्था में। समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। वो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो साम्य की अवस्था में रहता है ज्ञान। जैसे बचपन से आसपास के लोगों ने बताया, घर के लोगों ने बताया, टीचर ने बताया कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने मेल और फीमेल को बनाते समय बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो किए, मेंटल डिफरेंसेस नहीं किए। दोनों को समान बुद्धि दी, और ये मैंने मान लिया। तो नॉलेज सामने में हो, इसको, जिस ज्ञान को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपने कहा सड़क पर बाएं चलना चाहिए, अगर आप बाएं चलना शुरू कर देते हैं, आप मान लेते हैं आपका वो ज्ञान सामने में इक्विलिब्रियम में, जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया वो इक्विलिब्रियम। नॉलेज ऐसे ही इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कभी कभी किन्हीं चीजों से डिस्टर्ब होता है।
जैसे आप पानी है बर्तन में रखा हुआ, शांत है, इक्विलिब्रियम में है, आप उसमें कंकड़ मारी, पत्थर मारी छोटा सा, अब वो पानी डिस्टर्ब हिले, अब वो हिलते नहीं रह सकता, जिसकी बात हुई वो फिर से ठहरेगा। लेकिन अब जो पहला ठहरना है, पहला जो सामने था और जो नया इक्विलिब्रियम है, उसके बीच में गैप है। पहला इक्विलिब्रियम थोड़ा सा नीचे था, पहला इक्विलिब्रियम, अब नया इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ऊपर है। और ये जो दोनों इक्विलिब्रियम के बीच में गैप है, ये वो जगह जो पत्थर ने अपनी जगह बना ली। नॉलेज में भी ऐसा ही है। मेरा इक्विलिब्रियम है कि लड़के लड़कियां आईक्यू के मामले में एक जैसे हैं। लेकिन हर बार जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो टाइटल होता है, अभी आया था 2 हफ्ते पहले, टाइटल था लड़कियों ने बाजी मारी। अब मेरा पत्थर लगा उसको फिर दे, मैंने तो मान रखा है, शुरू से एक्सेप्ट कर रखा है लड़के लड़कियां बराबर है। लेकिन ये क्या हो रहा है, तो हर बार लड़कियां टॉप करेंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियां लड़कों से आईक्यू के मामले में बेहतर है? इज देयर एनी डिफरेंस अमंग बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ आईक्यू? ये जो प्रश्न मेरे दिमाग में खड़ा हुआ है, ये वो कंकड़ है जो लगा है। और अब जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं तलाश कर फिर से उस नॉलेज को इक्विलिब्रियम में नहीं ले आऊंगा, मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब रहेगा। और अब जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो पहले के मुकाबले नया होगा, तो जो बीच में लर्निंग है, ये जो प्रश्न खड़ा हुआ, यही है जिसको आप रिसर्च क्वेश्चन। हर विषय की, हर रिसर्च में शुरुआत यही से, जब आपकी एस्टेब्लिश्ड नॉलेज में कम कर, अब वो किसी भी साइंस में लगे। कोविड आया, मेडिकल साइंस के व्यक्ति को लगा, अरे यार ये सब वायरस की दवाएं काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है आई नीड टू सर्च फॉर अ न्यू सॉल्ट फॉर वायरल ट्रीटमेंट। पत्थर लगा है, क्योंकि जो एस्टेब्लिश नॉलेज थी, इस वायरस के लिए ये, इस वायरस के लिए, इस वायरस के लिए सॉल्ट, ये काम नहीं कर रहे हैं, अब वो डिस्टर्ब है ना। तो कौन सा सॉल्ट काम करेगा कोविड के लिए? रिसर्च। हर विधा में, हर डिसिप्लिन में आपकी रिसर्च शुरू होगी है रिसर्च क्वेश्चन। ये अलग बात है कि हम फॉर्मली उसको लिखते हो या ना लिखते हो। एजुकेशन की रिसर्च में हम लोगों ने बड़े नए कंफ्यूजन बना रखे हैं, मिसकंसेप्शन बना रखे हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर नहीं नहीं, मेरी तो क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं, इसलिए मैं रिसर्च क्वेश्चन नहीं, या मैं हाइपोथेसिस बना ली इसलिए रिसर्च क्वेश्चन नहीं, या वाइस वर्सा, मैंने हाइपोथेसिस नहीं बनाई इसलिए मैं रिसर्च क्वेश्चन बना रहा हूँ। मिसकंसेप्शन है। रिसर्च क्वेश्चन शुरू में होगा ही, शुरू ही होगी रिसर्च क्वेश्चन। और वो जो रिसर्च क्वेश्चन आपका शुरू हुआ, श्रीवास्तव सर को नमस्कार, वो जो रिसर्च क्वेश्चन शुरू हुआ, वहां से रिसर्च की आपकी शुरुआत, तो जो पत्थर डिस्टर्ब हुआ। अब आप उसको फॉर्मली प्रपोजल में लिखते हो ना लिखते हो एक अलग मामला, कि सब्जेक्ट पर मैटर वेरी करता है, उससे कोई बहुत इश्यू नहीं। अब मुझे उस प्रश्न का उत्तर तलाशना है। उत्तर तलाशने के लिए आप जरा जाइए, हर सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के तरीके। फिलोसफी का सब्जेक्ट मान लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। हर विषय में ज्ञान प्राप्ति के तरीके बताए जाते हैं। साइंस वालों को भी शुरू में बताया जाता है साइंटिफिक मेथड। अगर आपको सबको याद हो, प्राइमरी क्लासेस में बताया जाता है विज्ञान का तरीका क्या है, साइंटिफिक मेथड। 5 स्टेप बता के 5 चरण बताए जाते हैं, वैज्ञानिक विधि के चरण। हर विषय का अपना ज्ञान प्राप्ति का तरीका। कॉमनली बहुत सारे तरीके हैं ज्ञान प्राप्ति के। जैसे एक तरीका है अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी आपको बता दे, आप उसको मानो। जैसे आपको कहा स्कूल में सड़क पर बाएं चलना चाहिए, आपने मान लिया, अथॉरिटी। टीचर अथॉरिटी हो सकता है, आपके पेरेंट्स अथॉरिटी हो सकते हैं, आपका कोई साथी अथॉरिटी, जो उसको कमांड के साथ आपको कन्वे कर दे, आप उसको मान लें अथॉरिटी। लंबे समय तक वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च अथॉरिटी रहा है। जो चर्च कह देता था वो फाइनल। रिलीजियस बॉडीज भी अथॉरिटी रही, तो अथॉरिटी एक तरीका है। ऐसे ही फिर तरीके, जब ये अथॉरिटी को चैलेंज होना शुरू, बहुत सारे तरीके। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन। आपको ठंड लगती है, आप आग के पास बैठे, आपको ठंड लगनी बंद हो गई, आपको अनुभव हुआ, आपने मान लिया कि आपके पास बैठने से ठंड चली जाए। एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन, आप दूसरे को करते हुए देखते हैं, किसी दूसरे में गर्म बर्तन छुआ, आपका हाथ जल गया, आप खुद नहीं चलाते अपना हाथ, आप उसको देख के सीख जाते हैं। ये सब मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के तरीके हैं। इन्हीं सब में चलते चलते जब ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ, तो एक डिडक्शन अप्रोच है, आप जिसको निगमन विधि बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति की निगमन विधि। सुकरात वही करता था, सोक्रेटिस क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू। उसका था कि राजा के बारे में, लोग तो राजा को ईश्वर का दूत मानते थे,
तो कहता था कि तुम्हारे कितने हाथ पैर हैं? जो 2 हाथ 2 पैर, राजा के कितने हैं? 2 हाथ 2 पैर। तुम्हारी कितनी आंखें हैं? राजा की कितनी है? तुम मरोगे नहीं मरोगे? राजा फिर मरेगा नहीं मरेगा? अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा डिडक्टिव अप्रोच जानते हैं, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, कंक्लूजन। मेजर प्रेमाइस, सभी मनुष्य मरणशील है, राजा भी मनुष्य है, उसने लॉजिक से सिद्ध किया, और बोले आप मरोगे तो राजा भी। इसी से तो उसको कहा गया तो विद्रोह राजा के खिलाफ बोलते हो, और बाद में जहर दे दिया। डिडक्टिव अप्रोच, बहुत लंबे समय तक डिडक्टिव अप्रोच एक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के रूप में चला है। फिर बाद में अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो डिडक्टिव के बाद में इंडक्टिव अप्रोच। फ्रांसिस बेकन की किताब है नोवम ऑर्गेनम, उसमें उसने इंडक्शन को फ्रांसिस बेकन को माना जाता है मतलब इंडक्टिव अप्रोच के लिए। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसके बारे में कही जाती है, आप लोगों ने शायद सुन रखी हो, घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। राजा के दरबार में बहस छिड़ी, कोई सी आके पूछा कि साहब घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं? किसी को पता नहीं था। एक सभा में सबसे पूछा गया, किसी को पता नहीं था। तो राजा ने एक कमेटी बना, जरा पता करो घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। और ये वो टाइम था जब केवल डिडक्टिव अप्रोच चलन में थी, इंडक्टिव आई नहीं। डिडक्टिव अप्रोच के लिए एक मेजर प्रीमाइस चाहिए, किसी ग्रंथ में लिखा हो, किसी अथॉरिटी ने कह रखा हो, कहीं तो लिखा हो कि हाँ घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो कमेटी ने सर्च करने शुरू किए, सारे धर्म को घूमना शुरू किया। घोड़े के मुंह चल रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कमेटी बैठ कोई ग्रंथ में मिल नहीं रहा है घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो एक कोई यंग व्यक्ति रहा उनकी कमेटी में, उसने कहा कहाँ चक्कर में पड़े आप, छोड़ो लाओ, मुंह खोलो दिल। कहानी कहती है कि उन्होंने उस बच्चे को भगा दिया। ये कोई तरीका है? तुम तो कितना अनपायस वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जैसे आप सोचिए जरा, अभी आप लोगों ने शायद वो पढ़ी होगी दा विंची कोड किताब, उसके ऊपर मूवी भी बनी। जैसे अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी द चर्च, आपने उसके खिलाफ कुछ भी बोल दिया, कितना अपवित्र बात आपका ऐसा रहा है, ये सिस्टम रहा है। ऐसे आपने डिडक्टिव अप्रोच है, आपने बिना मेजर प्रीमाइस से कंक्लूड करने की बात कर रहे हो, कितनी अपवित्र बात कर रहे हो, उसको भगा दिया बच्चे को। और कहानी कहते हैं कि 1 हफ्ते तक चलती रही खोजबीन और लास्टली उसको क्लोज कर दिया गया, ये कहते हैं कि चूंकि कोई मेजर प्रीमाइस मौजूद नहीं, कहते हैं कोई मेजर प्रीमाइस मौजूद नहीं है, इसलिए ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इस घोड़े के किसी घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। मीटिंग क्लोज कर दी। ये इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव अप्रोच कहता है कि एक एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल देखो, कंक्लूड करो। न्यू नॉलेज का जनरेशन इंडक्टिव नहीं पढ़ता, लेकिन इंडक्टिव के साथ भी लिमिटेशन है। आप कई बार हो सकता है आप 10 एग्जांपल देखेंगे, 20 देखेंगे, 5,000 देखेंगे, कब कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, कब जनरलाइजेशन पर पहुंचेंगे, नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए फिर बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्शन एंड डिडक्शन, जिसको आप साइंटिफिक मेथड कहते हैं आज की डेट, जिसमें 5 चरण आप कहते हैं कि समस्या को पहचानना, परिकल्पना का निर्माण, मेकिंग हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, टेस्टिंग, कंक्लूजन, ये जो 5 चरण है। और आज की डेट में इसी को हम कहते हैं कि जो इस मेथड से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान, ऑथेंटिक नॉलेज हम उसको कहते हैं आज। ये साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स फॉलो करते हुए जो हम चलते हैं। पॉइंट ये है, मैंने ये सारी कहानी इसलिए कही, जो मेरे दिमाग में प्रश्न है, लड़के और लड़कियों के मध्य आईक्यू में अंतर होता है या नहीं, यही है ना मेरा प्रश्न जिसने मुझे डिस्टर्ब कर रखा है। अब इसका मैं उत्तर कहां से तलाशूं, किस मेथड से तलाशूं? ठीक, मैं गया अपने फादर के पास, मैंने पूछा था ये तो अंतर ऐसे आता है, बताओ क्या कहते हो। एक तरीका ये भी हो सकता है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने तय किया कि मैं साइंटिफिक मेथड, रिसर्च में आप ऐसे ही तय करते हैं और आप साइंटिफिक मेथड से पढ़ना शुरू। जब आप साइंटिफिक मेथड से पढ़ना शुरू करते हैं, यहां आपके पास 2 अप्रोचेज आती है सुनने की। एक जिसमें आप बंधे हुए रास्ते से चलना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, फिक्स्ड रास्ता है, जहां से आपको पिता महेश्वर पहाड़ पर जाना है, फिक्स रास्ता बना हुआ, आप चले जाइए। दूसरा तरीका है कि नहीं, मैं उस फिक्स रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से चलना शुरू करता हूं, मैं किसी से नहीं, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, जो जो जैसी जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे फिक्स रास्ते से जाना है तो मुझे पहले से गाड़ी का अरेंजमेंट, रिक्शे का अरेंजमेंट या किसी का अरेंजमेंट करना होगा ना। जब मैंने तय किया कि नहीं, मैं देखता हूँ, एक तरफ से चलना शुरू करता हूँ, देखूंगा जहां जैसी जरूरत लगेगी, यहाँ गाड़ी की जरूरत, मैं गाड़ी ले लूंगा,
यहाँ पैदल चलने की, मैं पैदल चलना शुरू कर दूंगा। ये जो मेरे तरीके हैं दो, इनके बेसिस पर सारी रिसर्च को आप दो हिस्से में बांटते हैं, एक क्वालिटेटिव अप्रोच, एक क्वांटिटेटिव। एलएनजी का जो क्वेश्चन, क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, कोई कम या ज्यादा नहीं है, ध्यान दीजिए। बस जिस प्रश्न का उत्तर मैं तलाशना चाहता हूं अपनी रिसर्च में, उसका मैं किस तरीके से, एक फिक्स रास्ते से चलना चाहता हूं या मैं एक नए तरीके से, इंडक्टिव तरीके से खोजना चाहता हूं। इंडक्टिव इंक्वायरी अगर मेरी नेक्स्टिक इंक्वायरी होगी, इंडक्टिव एनालिसिस होगा, तो वो क्वालिटेटिव है। और मैं फिक्स रास्ते से चलना चाहता हूं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इतनी सी। इसीलिए हाइपोथेसिस वाला स्टेप जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च का मामला, क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं। ये प्रश्न अगर कहीं आपको तंग करते हो तो ये मैं पहचान आपको बताऊं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस एक्चुअली एक टेंटेटिव सॉल्यूशन। वो टेंटेटिव सॉल्यूशन कहां से आएगा? कोई मेजर प्रीमाइस आपके पास मौजूद होगा, उसमें से आप लिंक कनेक्ट करिएगा। हाइपोथेसिस बनाना आप जानते हैं, हाइपोथेसिस आप बनाते कैसे? कुछ भी जो मन में आ जाए? नहीं। रिसर्चर जब रिसर्च हाइपोथेसिस बनाता है तो मन से कुछ नहीं, पूरी रिसर्च के लिए एक बिल्कुल दिमाग में बात बैठा लीजिए कि आपके पास प्रपोजल बनाते समय अपने मन से कुछ भी लिख देने का कोई स्कोप नहीं। इनफैक्ट पूरी रिसर्च में आपके पास अपने मन से कुछ भी लिख देने का स्कोप नहीं। जब आप लास्ट में डिस्कशन कर रहे होते हैं तब वहां आपको जो इस बीच में इंसाइट प्राप्त हुई है रिसर्च करते समय, आप उसको वहां मेंशन करते हैं। बाकी पूरा मेथोडोलॉजिकल मामला फिक्स्ड है, आपको तर्क के साथ, रैशनल के साथ चलना है। जैसे मैंने तय किया कि मैं क्वांटिटेटिव अप्रोच से चलूंगा सर इस प्रश्न का उत्तर तलाशने, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए पहला ऑप्शन है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैंने पहला प्रॉब्लम पहचान ली, लड़के लड़कियों के बीच में आईक्यू का अंतर मुझे पता, ये मेरा ऑब्जेक्टिव। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ आईक्यू अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये मुझे पता करना है। अब मैं दूसरा स्टेप है उसके बाद क्वांटिटेटिव में फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। यहां आप कई सारी चीजें समझते सुनते होंगे। एक आपने सुन रखा होगा शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, एक रिसर्च हाइपोथेसिस, तो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिए। रिसर्च हाइपोथेसिस अलग मामला है, नल हाइपोथेसिस अलग मामला है, और मैं कोई सी भी बना लूं नहीं चलती। दो चीजें यहां कहता हूं। रिसर्च हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, समस्या का संभावित हल, जो आपका प्रश्न है उसका एक टेंटेटिव आंसर, ये है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक की आप बात करें, मैं बेस्ट एंड कान को कोट कर रहा हूं, जनरल बेस्ट एंड कान की किताब पर पहली लाइन लिखते हैं वो इस बात को लेकर, रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव आप बचपन में पढ़ते हैं सेंटेंसेस के टाइप, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ही इज अ किंग, affirmative, he is not a king, negative, is he a king, interrogative। इसमें भी इसका मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस हमेशा अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगी। तो अगर आप नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, कह रहे हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, नल में तो नो टर्म आता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं, पहली बात। दूसरी बात, रिसर्च हाइपोथेसिस क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है। कई बार कुछ बच्चे पूछते हैं, आप लोगों से पूछते होंगे आपकी क्लासेस में, हम प्रश्न रूप में बना सकते हैं कि हाइपोथेसिस में संभावित हल है। हल प्रश्न में कैसे हो? वो तो प्रश्न का उत्तर है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा, ये निश्चित है रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं। रिसर्च हाइपोथेसिस, तीसरी बात, रिसर्च हाइपोथेसिस इज एन एकेडमिक गेस, नॉट अ वाइल्ड हंच। वो अकादमिक अनुमान है, तुक्का नहीं है, तो कुछ भी बना दो, गलत होगी तो रिजेक्ट नहीं। जैसे अभी इसी प्रश्न का मैं अगर संभावित उत्तर तलाशना चाहूं, क्या लड़के और लड़कियों के आईक्यू में सार्थक अंतर होता है? ये मेरा प्रश्न है, रिसर्च क्वेश्चन। इसका संभावित उत्तर क्या होगा जो सकारात्मक? बताइए कोई भी प्लीज। यस, उन्होंने कहा कि हाँ, लड़के और लड़कियों में सार्थक, लड़के में आईक्यू के मामले में सार्थक अंतर होता है, एक उत्तर ये हो सकता है। और
पॉज में जा रहे हैं जी प्लीज। ओके, आप वाई के उत्तर पर चले जा रहे हैं। मैंने वाई नहीं पूछा, इज मैंने पूछा वाई गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट एंड बॉयज नहीं कहा है। मेरा प्रश्न ये है, इज देयर एनी डिफरेंस अमंग बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ आईक्यू? Yes, according to the data. डेटा भी नहीं, अब मैं एक संभावित उत्तर तलाश रहा हूं अपनी रिसर्च में। Yes. यस नो। ओके, अगर नहीं, मैं आपका ओपिनियन नहीं चाह रहा, समझिए बात। फिर तो अभी आपको ओपिनियन, अभी तो डेटा कलेक्ट करेंगे। अभी तो जो मेरा शोध प्रश्न है वो ये है कि मुझे ये इस बात ने डिस्टर्ब किया कि हमेशा बचपन से बताया गया दोनों बराबर होते हैं, लड़कियां हमेशा टॉप करती हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इज देयर एनी डिफरेंस अमंग बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ To some extent, there is a proved theories that the age of puberty of boys and girls are different. They grow up. The puberty age of girl is 18, and there is 21 they get puberty. accepted? So Thank you, accepted. But this was not the question. Again, you are asking why. The question is not why. This is proved that this. That's okay. I'm not asking. ये रिसर्च में आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल ये हो चुकी है सब। मैंने एक सिर्फ हाइपोथेटिकल केस, अभी मैं कोई नई प्रॉब्लम का केस लूंगा तो कैसे आप पकड़ पाएंगे? मैं वाई का आंसर बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये एस्टेब्लिश्ड है, मान लिया। और वैसे भी नारी शक्ति को प्रणाम भाई ज्यादा होता है, छोड़िए वो डिबेट में नहीं। अभी बात यह है कि मैं संभावित उत्तर ये भी हो सकता है कि नहीं दोनों बराबर होते हैं, सकारात्मक होते। किसी ने कहा कि नहीं दोनों बराबर नहीं होते लड़के लड़कियां आई के मामले में। जैसे मैंने संभावित उत्तर दिया दोनों बराबर नहीं होते, ये नकारात्मक कथन है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं होती। हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ, हाइपोथेसिस जो बनाते हैं। अगर मैं ये इस प्रश्न के बदले में क्या लड़के लड़कियों में सार्थक अंतर होता है आईक्यू के मामले में, अगर इसमें मैं ये हाइपोथेसिस बनाऊं नहीं दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों में अंतर नहीं होता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसी को कुछ लोग स्मार्टली कह सकते हैं दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए नकारात्मक कथन नहीं है ना, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, बॉयज और गर्ल्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ आईक्यू। ये भी संभावित हल नहीं है। क्यों? अगर ये हल है तो आपका प्रश्न शुरू ही क्यों हुआ? ये तो आपकी एस्टेब्लिश नॉलेज थी, आपका इक्विलिब्रियम तो ये था ही कि दोनों बराबर हैं, यही तो डिस्टर्ब हुआ है, तो यही सॉल्यूशन करते हो आप, समझ रहे? अब मामला ये है कि उत्तर क्या बचा, दोनों में सार्थक अंतर होता है। एक तो आप ये कह सकते हैं ये संभावित हो सकता है, दूसरा संभावित हो सकता है लड़कियां लड़कों से आईक्यू के मामले में बेहतर, ये भी सकारात्मक कथन है, संभावित उत्तर है। लेकिन मैं, और इसमें देखिए एक डायरेक्शनल है एक नॉन डायरेक्शनल। जब मैंने कहा लड़के लड़कियों में सार्थक अंतर होता है तो मैं अंतर की बात तो कर रहा हूं, लेकिन कौन ज्यादा है ये नहीं बता रहा, इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल रिसर्च है। लेकिन जब मैंने कहा लड़कियां लड़कों से आईक्यू के मामले में बेहतर होती हैं, तब मैं संभावित उत्तर है, सकारात्मक कथन है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, लेकिन डायरेक्शनल, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल रिसर्च हाइपोथेसिस। मैं अपनी रिसर्च में कौन सी बनाऊं, डायरेक्शनल बनाऊं या नॉन डायरेक्शनल बनाऊं? ये भी यहीं के लिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं बोल रहा हूँ। रिसर्च हाइपोथेसिस इज एन एकेडमिक गेस, नॉट अ वाइड आंसर। कुछ भी बना दो चलेगा नहीं, क्योंकि आपने, अगर आपकी रिसर्च को जरूरत थी नॉन डायरेक्शनल रिसर्च हाइपोथेसिस की, और अगर आपने डायरेक्शनल बना दी, आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं। और अगर आपने डायरेक्शनल की जरूरत थी आपकी रिसर्च में और आपने नॉन डायरेक्शनल बना दी, आप टाइप 2 एरर कर रहे हैं। आई बिलीव आपने टाइप 1 टाइप 2 एरर के नाम सुन रखे हैं, रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होती है टाइप 1 टाइप 2। दोनों में से उल्टा चलती है, एक घटती है दूसरी बढ़ती है। मैं एरर ना करूं उसका एक ही तरीका है कि मैं सही बनाऊं। ये कैसे तय होगा कि मैं डायरेक्शनल बनाऊं या नॉन डायरेक्शनल बनाऊं? मेरा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, एकेडमिक गेस का मतलब अकादमिक, मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस मतलब मेरी डिग्री नहीं, एमए पीजी ये सब नहीं, इस रिसर्च से रिलेटेड मैं सिर्फ ढूंढना शुरू करूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसको आप टेक्निकली रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आपने कभी गौर किया है कि दूसरे चैप्टर का यूज क्या है? एक जगह से कॉपी पेस्ट मारते हैं, दूसरी जगह आप उतार देते हैं। ज्यादातर जगह सोशल साइंस में तो यही चलता है ना, एजुकेशन वाले तो यही करते हैं, बोले कितने रिव्यू लिखे सर, कम से कम 100 तो होने चाहिए, इतने पेजेस होने चाहिए, हम ऐसे बताते हैं। उसका यूज क्या है? उसका यूज यही है कि जब मैंने तय किया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर तलाशूंगा, तो मैं कैसे तलाशूं, क्या मेरा तरीका हो,
किस टूल से मैं नापूं, कैसे मैं एनालाइज करूं, कैसे मैं कंक्लूड करूं, ये कहां से सीखूंगा? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आसपास के और लोगों ने भी उस एरिया से संबंधित कुछ काम कर रखा होगा, उसको देख के मैं सोचता हूँ, बनाता हूँ, और उसी से मुझे निर्देश मिलता है कि मैं डायरेक्शन बनाऊं या नॉन डायरेक्शन। रिव्यू आपकी मेथोडोलॉजिकल डिसीजन के लिए होता है, इसलिए रिव्यूज को सिर्फ क्रोनोलॉजिकली लिख देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। रिव्यूज कायदे में आपको लिखने चाहिए मेथोडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप हाइपोथेसिस के लिए डिसाइड करना चाहते हैं तो हाइपोथेसिस का डिस्कशन करें, जब आप टूल का डिसीजन लेना चाहते हैं रिव्यू के बेसिस पर तो टूल्स का डिस्कशन करें, जब आप वेरिएबल्स की बात करना चाहते हैं, सर आपके प्रश्न का उत्तर है, जब आप वेरिएबल्स की बात करना चाहते हैं तो वेरिएबल्स से रिलेटेड स्टडी रिव्यू करें, उसी सेगमेंट में, उसी ग्रुप में, क्लस्टर में आपके रिव्यू लिखे जाते हैं। एक एजुकेशन वाले लोगों के लिए खासकर है, बाकी लोग इसको रेफर कर सकते हैं। वेरी हाई इंपैक्ट फैक्टर जनरल RER, रिव्यू ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, वो सिर्फ रिव्यू के पेपर ही चाहता है, बहुत अच्छा जर्नल है, उसको आप ऑनलाइन इंप्लीमेंट अपने आप ही निश्चित होगा ही, इंप्लीमेंट के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तब मैंने जब हाइपोथेसिस डिसाइड कर ली, टेंटेटिव सॉल्यूशन, अब मैं इसके लिए डेटा कलेक्ट करना चाहता हूं। तो डेटा में किससे कलेक्ट करूं? मैंने कहा कि बॉयज और गर्ल्स, कौन बॉयज और गर्ल्स? पूरे भारत के? सिर्फ बिहार के, बिहार और यूपी के, सिर्फ गया के, सिर्फ CBSE बोर्ड वाले, कौन? किससे मुझे डेटा कलेक्ट करना है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? यहां हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन अगर मैंने डिफाइन कर दी, सिंपल मामला पॉपुलेशन का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच आर कॉमन इन एटलीस्ट वन कैरेक्टर। पॉपुलेशन का मामला सिर्फ ह्यूमन बीइंग से लेना देना नहीं। बोध गया में घूमने वाली सभी आवारा गाय एक पॉपुलेशन है। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हुए सभी नीम के पेड़ एक पॉपुलेशन है। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हुए सभी पेड़ दूसरी पॉपुलेशन। केवल नीम के पेड़ अलग पॉपुलेशन। कुछ भी इस रूम में रखी सारी लाल रंग की कुर्सियां एक पॉपुलेशन। कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कॉमन इन एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन। और प्रायोरिटी में आपको डेटा हमेशा, इंफॉर्मेशन हमेशा पूरी पॉपुलेशन से कलेक्ट, सैंपलिंग से नहीं। लेकिन मिथ कुछ जो बने हुए हमारे में उसको ब्रेक करने की बात कर रहा हूं। हमको लगता है सैंपलिंग करके बहुत बड़ी चीज करें, नहीं। सैंपलिंग मजबूरी में की। अगर आप अच्छी रिसर्च तकनीक में करना चाहते हैं, आप बिल्कुल ऐसे समझिए, मीडियन नोट सब निकालते हैं ना, अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा होता है क्लास वाला, एक ही डेटा अनग्रुप में भी मौजूद है, ग्रुप में भी मौजूद है, किससे मीन बेहतर निकलेगा? सर ने कितना बढ़िया आंसर दिया, सर थैंक यू। अनग्रुप से, अनग्रुप में हर डेटा अपना कंट्रीब्यूशन देता है मीन निकालने में। ग्रुप में आप एक उनका डेटा चुन लेते हैं, 10 से 20, फ्रीक्वेंसी 5, तो बोले मान लिया सभी 15 है। ये बिल्कुल ऐसे ही मामला है कि आप अपनी बात खुद कहें या अपना प्रतिनिधि भेज के कहें। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से अपनी बात कहवाएंगे किसी को तो अच्छी कम्युनिकेट होगी, या खुद कहेंगे तो अच्छी कम्युनिकेट होगी। जब आप खुद कहेंगे, सैंपलिंग का मामला भी ऐसा ही है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है व्यक्ति, आपने उनका एक प्रतिनिधि ग्रुप चुन लिया। जब आप पूरी पॉपुलेशन से स्टडी करते हैं, आप सबकी बात सुन रहे हैं, इसलिए हमेशा पॉपुलेशन की स्टडी करना ज्यादा बेहतर है। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और जब जो स्टैटिस्टिक्स हम पूरी पॉपुलेशन के यूज करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो चीजें यूज की जाती हैं, मीन मीडियन मोड, जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो ग्रीक लेटर्स में लिखे हैं। आपने कई बार देखा किताबों में लिखा हुआ म्यू लिखा है, म्यू के लिए, कहीं मीन के लिए एम लिखा है, कहीं सिग्मा के लिए वो वाला गोल वाला 6 जैसा सिग्मा लिखा होता है, कहीं सिग्मा के लिए SD लिखा होता है। ऐसा क्यों? जो सिग्मा ग्रीक में लिखा है पॉपुलेशन का है, जो रोमन में लिखा है सैंपल। सैंपल के लिए जो चीजें कैलकुलेट की जाती है वो सैंपल स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ग्रीक रोमन लेटर्स में लिखी जाती है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट है, रोमन स्क्रिप्ट है ना। और पॉपुलेशन के लिए जो चीजें कैलकुलेट की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और उनको पैरामीटर कहते हैं। वैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की जाती है, पैरामीटर उनको बोलते हैं, और पैरामीटर्स ग्रीक लेटर्स में होते हैं। तो मैं पॉपुलेशन से अगर मैं कलेक्ट करूंगा तो सबकी बात आएगी। लेकिन अगर मेरे पास ये सिचुएशन है कि मैं पूरी पॉपुलेशन से स्टडी नहीं कर सकता, फिजिबल नहीं है,
तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव टुकड़ा चुनूं, उसको आप सैंपलिंग बोलते हैं। सैंपलिंग के भी दो तरीके हैं। एक तरीका जिसमें आप अपनी पॉपुलेशन के प्रत्येक व्यक्ति को ये चांस दे बराबर कि तुम सैंपल के रूप में आ सकते हो, इसको आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जहां पॉपुलेशन के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर चांस है सैंपल के रूप में चुने जाने। दूसरा तरीका जहां सबको बराबर चांस ना दे, मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, यहाँ से सबको बराबर चांस नहीं। मैं गया से डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, रहता हूँ बोधगया में, तो मैं बोधगया से डेटा कलेक्ट कर लूँ, हाँ आराम है मेरे से। सबको बराबर चांस नहीं दिया, जो गया टाउन में उनको मैंने चांस दिया ही नहीं, जो शेयर कलेक्ट चांस दिया ही नहीं। इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट सही समझ में आती है, ऑब्वियसली रिजल्ट ज्यादा बेहतर आपको प्रोबेबिलिटी है। इसलिए मैं, कुछ लोग इसको अपोज करते हैं कि आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों बोलते हैं इस बात को, लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि अगर आपको डेटा अच्छा चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स निकालने, पहली हायरार्की में पहली प्रायोरिटी पूरी पॉपुलेशन से अगर संभव नहीं है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगर संभव नहीं है तो नॉन प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आप करते हैं 4 टाइप की पॉपुलेशन को, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर और एरिया। पॉपुलेशन का नेचर क्या है उसके बेसिस पर डिसाइड। ऐसे नॉन प्रोबेबिलिटी में आप करते हैं कोटा सैंपलिंग, दूसरा आप करते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग, उसी का दूसरा नाम है एक्सीडेंटल सैंपलिंग, उसका तीसरा नाम है इंसिडेंटल सैंपलिंग, उसी का चौथा नाम है सैंपल ऑन द स्ट्रीट सैंपलिंग, उसी का पांचवा नाम है वॉलंटियर सैंपलिंग। एक ही के सब नाम है, कुछ किताबों में आपको अलग अलग लिखे मिल जाएंगे तो गड़बड़ है, एक ही के सारे। ऐसे ही एक सैंपलिंग है आपकी जिसको आप कहते हैं चेन सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग उसका दूसरा नाम, रेफरेंशियल सैंपलिंग उसका तीसरा नाम है, एक ही सैंपलिंग। चौथा आप करते हैं पर्पजिव सैंपलिंग, उसका ज्यादा बेहतर नाम है जजमेंटल। बड़ा मिसकंसेप्शन है पर्पजिव सैंपलिंग को। हम कॉमनली कहते हैं पर्पजिव सैंपलिंग कौन सी, तो जो मेरे पर्पस को सर्व करती है वो पर्पजिव सैंपलिंग। कौन सी सैंपलिंग आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रही है भाई? सिंपल रैंडम सैंपलिंग की पर्पस सर्व नहीं होगा, मिसकंसेप्शन है पर्पजिव सैंपलिंग, इसलिए उसका बेहतर नाम है जजमेंट। चलिए, तो मैंने ये चेक कर लिया कि मैं किससे डेटा कलेक्ट करूंगा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैं क्या टूल यूज करूं। अब यहाँ टूल यूज करने में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, खासकर ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, जो फिजिकल साइंसेज में नहीं है, वहां एक कंफ्यूजन नहीं है, हमारे यहाँ है वो कंफ्यूजन। फिजिकल साइंसेज में एग्जैक्टनेस है, 1 मीटर की एक ही डेफिनेशन है, चाहे नाप लीजिए चाहे यूएस में, फिक्स है मान, कोई कंफ्यूजन है, टूल क्लियर है। बिहेवियरल साइंसेज में मामला क्या है, हम डील कर रहे होते हैं ऐसे वेरिएबल्स, वहां वो डील कर रहे हैं किससे, वेट से, हाइट से, क्वांटिटी, नाप लीजिए सीधा सीधा था। लेकिन हम किससे डील कर रहे होते हैं, आईक्यू, कोई पैमाना है दिमाग पे लगाओ ना, नहीं, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, कोई तरीका ही नहीं आप देख के बताओ। हम कंस्ट्रक्ट से डील कर रहे होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप सीधे नहीं नाप सकते, उनको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। और बिहेवियरल साइंसेज में हम कंस्ट्रक्ट से डील कर रहे होते हैं, जबकि पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हैप्पीनेस, पर्सनालिटी, उसका इंटेलिजेंस। और जब हम जिन चीजों को हम डायरेक्ट देख ही नहीं पा रहे, इसलिए उनको लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन करते। आपने कभी गौर किया इंटेलिजेंस कितनी सारी डेफिनेशन क्यों है? मीटर की तो नहीं, 1 किलोग्राम की तो नहीं, 1 सेकंड की तो नहीं, एक ही डेफिनेशन है फिक्स, पूरा वर्ड अग्री करता है। लेकिन इंटेलिजेंस की यहाँ पे 10 डेफिनेशन, नेशनल ने कुछ और कहा, दिनेश ने कुछ और कहा, टर्मन कुछ और कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना सब में। ये सब डिफरेंस क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट नहीं देख पा रहे, आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली अंदर क्या मांग। तो हम कुछ बातों पर, मैं कौन सी वाली डेफिनेशन पकड़ूंगा और उसके हिसाब से मैं किस टूल से नापूंगा। इंटेलिजेंस नापने के लिए आपके पास वर्टिबिलिटी, इंटेलिजेंस नापने के लिए आपके पास आर्के टंडन का टेस्ट भी है, इंटेलिजेंस नापने के लिए आपके पास डेलोटा का टेस्ट भी है। सब आइटम्स अलग अलग है, सबके क्वेश्चंस अलग अलग है, कौन सा वाला सही है? टेक्निकल को आप ऐसा नहीं करते, आप एक घड़ी यूज कर लीजिए, दूसरे की घड़ी यूज कर लीजिए, मोबाइल यूज कर लीजिए, कोई ये नहीं कहता कि मेरा वाला सेकंड है तुम्हारा वाला सेकंड। आप जब किलोग्राम में नापते हो तो ये नहीं कहते उनका वाला किलोग्राम मेरा वाला किलोग्राम। लेकिन यहाँ आपको बताना होगा डेफिनेशन कौन सी बोले, सब वेस्ट कर, टूल कौन सा बोले, किससे नापा है, टंडन वाला, ये आपको बताना पड़ता है ताकि कंफ्यूजन ना। जब आप ये बताते हैं कि मैंने इंटेलिजेंस को किससे नापा, बोले जेलोटा के टेस्ट, ये आप एक्चुअल में ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं वेरिएबल,
इसी को बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म, ऑपरेशनल डेफिनेशन टर्म्स का मतलब है कि कंस्ट्रक्ट को आप अपनी रिसर्च में, ये फिजिकल साइंस वालों का मामला नहीं है, बिहेवियरल साइंस वालों का मामला है, कंस्ट्रक्ट को आप अपनी रिसर्च में कैसे नाप रहे, कैसे आपने इसको ऑपरेशनलाइज, ये बताना। और लेमैन शब्दों में कहूँ, सीधा सीधा ये बता दो भैया कौन से टूल से नाप रहे हो, अपना बना रहे हो या किसी दूसरे का स्टैंडर्डाइज यूज, ये बता देना ऑपरेशन। तो मैंने अगर टूल भी आइडेंटिफाई कर लिया तो अब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा और अपनी हाइपोथेसिस की जांच करूंगा। लास्ट बात कहकर मैं खत्म करता हूँ बात को, फिर आपके कुछ क्वेश्चन तो उसको बताता हूँ। हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने ले लिया उसका आईक्यू है, बॉयज का आईक्यू आ गया एवरेज, और बॉयज ले लिया, मान लीजिए 100 गर्ल्स ले लिया आपने, उनका आईक्यू है आपके पास, उनका आईक्यू है, एवरेज है। अब दोनों में अंतर है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करेंगे? यहाँ भी मामला सीधा सीधा नहीं है, हाइट में अंतर मामला निकाला जा सकता है, वेट में अंतर निकाला जा सकता है, इसमें मामला यहाँ चांस फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जब आप आईक्यू का टेस्ट ले रहे थे, जिस बच्चे से आपने लिया, अभी अभी घर में अपने पापा से पैसे मांगे थे, पापा ने हमारे को उसका है मूड खराब, उसने उत्तर नहीं दिया। दूसरे बच्चे ने, उसने जब आंसर भरा था, अचानक उसका पेन इंक खत्म हो गई। There are so many chance factors which can affect your result. You cannot control. अचानक से बच्चा आप टेस्ट भर रहा है, छोटा 9th क्लास का स्टूडेंट है, याद आया कि अरे आज तो माने खीर बनाई थी, मैं घर पहुंचूंगा स्कूल से खत्म ना हो जाए, अब मन लगा है खीर में, आप आईक्यू का टेस्ट लेंगे। बहुत चैलेंजेस हैं बिहेवियरल साइंस में डेटा कलेक्ट करने के, इसलिए चांस फैक्टर होता है। इसलिए जो सीधा सीधा सा आ जाएगा आप उसी को नहीं मान लेते, आप उसको स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं। इसलिए आप वो सब टी टेस्ट, यू टेस्ट सब यूज करते हैं, जेड टेस्ट, एनकोवा, एफ टेस्ट, जिसको आपने फिशर साहब ने बनाया, फिशर के नाम पर है फिशर टेस्ट। लेकिन टी टेस्ट जांचता क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस। टी टेस्ट तो नल हाइपोथेसिस का डिसीजन देता है, और आपने बना रखी है रिसर्च हाइपोथेसिस। मैंने ये कहा कि रिसर्च हाइपोथेसिस बनानी है, नल नहीं, तो जांच कैसे हो? हमारे पास आगे अब हम नल बनाए, जांच तो नल से होगी। नल के बदले में नल बनाएंगे इस तरीके से कि मेरी रिसर्च हाइपोथेसिस और नल में से कोई एक बात नहीं। लड़के लड़कियों के बीच में सार्थक अंतर होता है आईक्यू के लेके, मेरी रिसर्च हाइपोथेसिस है। लड़के लड़कियों के बीच में आईक्यू को लेकर सार्थक अंतर नहीं होता है, ये नल हाइपोथेसिस है। इन दो में से कोई एक ही बात सही होगी। अगर मैं इसकी जांच कर लूं नल की, तो अपनी बात जांच कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको जांचूंगा, इसके बदले में इसकी भी जांच हो जाएगी, इसके बदले में हम इसको रख रहे होते हैं, तो अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस को वही हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक प्रकल्प। कोई नई हाइपोथेसिस नहीं है, कोई अलग टाइप नहीं है, रिसर्च हाइपोथेसिस ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाता है। ठीक, लेकिन ये सब इतनी कहानी करने की जरूरत क्या है? यहाँ मैं बस एक बात आपको रेफरेंस देकर छोड़ दे रहा हूँ, पढ़िए आप जरा फॉल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। थॉमस कून की और कार्ल पॉपर की डिबेट, आपने नाम सुन रखा होगा पॉलिटिकल साइंस में खासकर। थॉमस कून, पैराडाइम हम कहते हैं, पैराडाइम, पैराडाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? थॉमस कून। और एक कार्ल पॉपर हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन। उनकी बड़ी पॉपुलर डिबेट है, आप नेट में सर्च करेंगे मिल जाएगी। दोनों ही साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करते हैं अलग अलग। पॉपर बात करते हैं फॉल्सिफिकेशन, नल हाइपोथेसिस बनाओ, इसको झूठा सिद्ध करो, इसको सही मानो। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है टेस्टिंग का, रिसर्च है, ये कॉपर वाले में, आप जरा उसको पढ़िए, उसको देखिए, और इस तरीके से करके हम अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस की जांच करते हैं। मेरे पास में एक क्वेश्चन हमने और कहे थे, इस स्टाइल ऑफ मैनुअल की हम बात करें। सर स्टाइल ऑफ मैनुअल बहुत सारे हैं आपके फील्ड में, जैसे आप लैंग्वेजेस वाले हैं, वहाँ एमएलए ही चलता है, और ऑब्वियसली लेटेस्ट एडिशन। अगर किसी जर्नल को आपने टारगेट किया हुआ है, मैक्सिमम जर्नल जो अच्छे जर्नल्स हैं वो अपना तरीका बताते हैं, या तो लिख देते हैं कि ये एमएलए ये एडिशन, इसको फॉलो करिए, क्लियर हो गया मामला, या वो अपना तरीका बता देते हैं पूरा पेज कि सब हमारे में ऐसे रेफरेंस। तो आप जर्नल को अगर टारगेट कर रहे हैं रिसर्च पेपर के लिए, उसको फॉलो। अदरवाइज इन जनरल आप एक थीसिस लिख रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट में जो पॉपुलर आपका एक्सेप्ट करते हैं एमएलए, उसके लेटेस्ट एडिशन, जैसे हम बिहेवियरल साइंसेज में एपीए को फॉलो करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसके लेटेस्ट एडिशन को फॉलो करते हैं, ये मामला।
दूसरा जो उन्होंने कहा कि चैलेंज ने कहा कि कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हम कैसे करें। देखिए, जो मैं शुरू में बात की थी, मैं क्विकली उस पर पॉइंट बोलता हूँ। दोनों के अपने मेरिट्स, दोनों की अपनी लिमिटेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च की अपनी मेरिट ये है कि वो डीप में एक्सप्लोरेट करती है, लेकिन जब आप गहरा खोजेंगे तो ज्यादा एरिया में नहीं खोज पाएंगे, तो वो बहुत एरिया में जनरलाइज होता है। वहीं क्वांटिटेटिव में आप बहुत एरिया में करते हैं तो गहरा होता है, फिक्स रास्ते पे आप चल रहे हैं, आसपास की चीजों से आप काम कैसे करते हैं। दोनों के अपने फायदे होते हैं। बड़ा पॉलिसी डिसीजन आपको करना है तो आपको बड़ा डेटा चाहिए, आप क्वांटिटेटिव आपको स्पेसिफिक कॉज चाहिए, इसीलिए आप धीरे धीरे मिक्स मेथड्स की बात ज्यादा पॉपुलर करेंगे। यू कॉम्प्लीमेंट, आप एक की कमी को, लिमिटेशन को दूसरे के मेरिट्स से पूरा करें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के कॉम्बिनेशन। इसलिए अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चल रहा है, पॉपुलर है, डिमांड में है, डेटा दिखता है, स्टैटिस्टिक देती है, तो गलतफहमी में जाने की जरूरत नहीं, उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। आपका क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं नॉलेज गैप में, वो मैटर है, चाहे वो क्वालिटेटिव अप्रोच से हो चाहे वो क्वांटिटेटिव। देखियो मैडम साहब, आपने जो पूछा था वो शायद आप आगे इसमें कवर हो गई होगी। फंडिंग एजेंसी का एक मैंने पूछा था प्रश्न संजय जी ने। फंडिंग एजेंसी का देखिए सर मामला, उसमें भी एरिया स्पेसिफिक है, और जैसे सोशल साइंसेज में आप है तो आईसीएस के साथ बहुत कॉमन फंडिंग है, साइंसेज में डीबीटी वगैरह है। आपका क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश। यूजीसी आईसीएस भी फंड, मेरी जानकारी संभव गलत नहीं हो तो उस एरिया की, हर एरिया की बंदी फंडिंग एजेंसी है, ये बड़ी कॉमन फंडिंग एजेंसी। और आजकल तो और भी नए नए तरीके से गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है, और आने वाले टाइम और बड़ी प्राइवेट अकेडमी कर, और आने वाले टाइम पर और बढ़ेगी फंडिंग। एनईपी ने कहा है एक रिसर्च फाउंडेशन को बनाने के लिए 1.5 बजट में लॉट होता है गवर्नमेंट की तरफ, अब वो ग्रेजुअली फंड अपॉर्चुनिटीज अच्छी है आने वाले टाइम। प्रपोजल बनाई, शर्त यही है, जो आपने उधर पूछा था कि मैं वेरिएबल्स क्या रखूं। जब अगर मैंने उस प्रश्न को लिया होगा जिसने मेरा इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है, तो मुझे वेरिएबल की तलाश पे दूसरों के पास नहीं, तो मेरे ही पास नहीं, तो प्रश्न ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसके लिए और आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू, आपने इतने धैर्य से सुना। शैलेंद्र जी और टीम आप लोगों ने मुझे बुलाया, और विनय सर आपने भी वहाँ धैर्य से सुना। थैंक यू वेरी मच। कैच करो सर, माइक का ऑफ कर। अभी अलाउड है? Very good morning to all of you. Myself, Dr. Sanjay Kumar Pandey, Associate Professor in the Department of Education. सर मेरा सवाल है कि अभी जो थीसिस आ रही है, उनके जो प्रपोजल बनाए हैं उसके लेंथ के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन है या हाइपोथेसिस है, ये बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन है, किसी में हाइपोथेसिस 3 है, किसी में 5 है, किसी में 30-35 हाइपोथेसिस हमने जांच करते समय देखी। तो एक जो भी उसका जो फॉर्मेट है उसके प्रॉपर लेंथ के बारे में हम लोगों को दिखा देते तो अच्छा है। देखिए, एजुकेशन वाली बात से शुरू करूंगा। आपने एजुकेशन से स्पेसिफाई किया है, रिसर्च प्रपोजल को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे। अभी हाल ही में ये भी देखा कुछ जगह बच्चे रिसर्च प्रपोजल में पता चला कि 10 पेज का रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखा हुआ, तो रिसर्च कर तो क्या आधी से ज्यादा तो प्रपोजल का मतलब सीधा सा, और चाहे वो रिसर्च प्रपोजल हो चाहे वो थीसिस हो, एक चीज ध्यान दीजिए, आप रिसर्च की किताब नहीं लिख रहे, आप अपनी रिसर्च की रिपोर्ट लिख। आप ये मत बताइए कि सैंपलिंग कितना टाइप की होती है, ये सैंपलिंग रिसर्च में या की टेस्ट का मतलब क्या होता है ना, जिसको वो सीखना है वो रिसर्च की किताब पढ़ेगी, आपकी थीसिस नहीं। आप तो सिंपल ये बताइए कि मैंने ये सैंपलिंग यूज की है और क्यों यूज की है, और खत्म, और कितना सैंपल। ऐसे ही शुरू में मेरी समझ से, और कुछ लोग उसको इंट्रोडक्शन वगैरह डिफरेंट हेडिंग से बांट देते हैं, एक बहुत सिंपल सा बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी सफिशिएंट होता है प्रपोजल। वो सारा आपकी बात, वो बात जैसे मैंने कहा ना, कैसे मेरा प्रश्न शुरू हुआ,
कैसे मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, उस बात को आप रेफरेंस के साथ कहना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि ये बात, देखिए पेजेस में बांधना बिल्कुल भी सही मामला नहीं है, तो बिल्कुल फिक्स कर देता है मामले, लेकिन जितना क्रिस्प में आप अपनी बात कह सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप जो समय का हाइपोथेसिस बहुत सारी होती है, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है पीएचडी। रिसर्चर को ये समझना चाहिए कि पहली बात, दुनिया की हर प्रॉब्लम रिसर्चेबल हो ऐसा जरूरी नहीं। दूसरी बात, मेरे एरिया की प्रॉब्लम ही मेरी एरिया की प्रॉब्लम है, दूसरे एरिया में नहीं। तीसरी बात, मेरे एरिया की रिसर्च प्रॉब्लम की सारी रिसर्च प्रॉब्लम मेरी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं, दूसरे लोग भी करेंगे, मैं ही सारी रिसर्च कर दूंगा ऐसा नहीं होगा। तो मुझे उतना एरिया सेलेक्ट करना चाहिए, डिलिमिटेशन इसीलिए किया जाता है जितना मैं क्वालिटेटिव तरीके से कर सकूं। उसका संख्या, क्वालिटी का पैमाना संख्या से है ही नहीं। अभी जैसे मैं कई बार बातों को करता हूँ, हमारे प्रदेश के हैं ना तथागत कुर्सी, आईएससी से जब उन्होंने बहुत यंग एज में उन्होंने 10th किया था, जब उन्होंने पीएचडी उन्होंने किया आईएससी बेंगलोर में, उनकी थीसिस कितने भी 27 से 32 पेज की थी पीएचडी फिजिक्स में। तो ये क्वालिटी का मामला क्वांटिटी से नहीं लगता। और फिर एक और चलन जो बहुत भयंकर है एजुकेशनल रिसर्च में, खासतौर कि कुछ भी बनाया ऑब्जेक्टिव, उसमें सब में घुसा दिया, मेल फीमेल का डिफरेंस देख लो, औरत का देख लो, गवर्नमेंट प्राइवेट का देख लो। कैसे भाई? आप क्या डेमोग्राफिक वेरिएबल लेंगे? हर वेरिएबल के सिलेक्शन के पीछे तर्क देना होता है। आपको क्यों लगता है कि रूरल और अर्बन डिफरेंस मिलेगा? आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, क्या कोई इंडिकेशन है आपके पास? क्या कहीं से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है आपका? ये ऐसे ही कह दिया कि नहीं मेल फीमेल में भी दे दूं? नहीं, शर्त ये है कि आप अपनी बैकग्राउंड लिखिए, आपके जो प्रश्न है वो लिख दें, उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, हर वेरिएबल के पीछे आपको तर्क देना होता है। तो मेथड आपने यूज किया उसका तर्क चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन की यही डिजाइन क्यों यूज की, तर्क चाहिए, इतने ही दिन एक्सपेरिमेंट क्यों किया, तर्क चाहिए, सैंपल साइज यही क्यों लिया, तर्क चाहिए, सैंपल की टेक्निक यही क्यों यूज की, तर्क चाहिए, स्टैटिस्टिक्स यही क्यों यूज की, तर्क चाहिए, हर चीज रैशनल के साथ चाहिए, और वही लिखिए उसके जाना। Thank you, respected. Thank you, respected Professor Kaushal Kishore, sir. We are humbled and grateful for the insightful and thought-provoking lecture you provided on the topic of research writing. It was an incredibly informative session with direct interaction with the participants. Your explanations were delivered with such clarity and passion, and it was evident that you have a wealth of experience and knowledge in this highly important field. The session was not only informative but engaging as well. On behalf of all the participants, I would like to thank you for your valuable contribution to our learning experience. Once again, thank you for sharing your knowledge and expertise with us, sir. We look forward to applying what we have learned from you in our research pursuits. Thank you, sir. अब हम अपने द्वितीय तकनीकल सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं और द्वितीय तकनीकी सत्र में हमारे साथ प्रोफेसर रिजवान खान सर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और हम उनके व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रिजवान खान सर। मैं आपको आज की द्वितीय तकनीकी सत्र में सादर आमंत्रित करती हूँ, आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इस मगध विश्वविद्यालय परिवार और इस कार्यशाला के आयोजक मंडल की ओर से आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर रिजवान खान sir is a professor and former head Department of English at AMU Aligarh with an experience of teaching and research for more than 3 decades.
His areas of interest are linguistic, empiricism, curricular planning and syllabus designing, material production, evaluation of courses and materials, teaching education, literary theory translation studies, and film studies. He holds rich exposure to international projects in language and literature studies. In addition, he delivered lectures and discourse and seminar as a visiting fellow at the Department of Arts and Ethics at IULM, University Milan, Italy, and at the Department of English and American Studies, University of Pannonia. He has also taught English in NTIC Oman and King Khalid University, Saudi Arabia on extraordinarily leave from AMU. He has been consistently engaged in various academic activities as organizers, keynote speakers, discussant, teacher educator in series of national and international seminars, conferences, and workshops. He is also an editor and an author. His edited books such as Build Your Language and Enrich Your Language, published by Cambridge University Press, and The Lasting Legacies of Mulk Raj Anand, attribute a remarkable contribution along with dozens of other publications. He has also received a number of awards and scholarship: Indo-Hungarian Exchange Fellowship 2010, SSR Award for Innovation in Teaching and Certificate of Unit Credit for a National qualification by Royal Society of Arts, London in 1998. सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपको आज के व्याख्यान के लिए इस मंच पर ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Are we going to share the slide? Yes, sir. Please share the slide. Is it visible to you, sir? Yes, it's visible. I'm highly thankful to the Vice Chancellor, Magadh University and his team, along with Professor Rahmat Jahan, the Director of IQAC, and the team for this very seminar that you are having these days. I'm thankful to the whole team. I saw them, I saw the slides in the very beginning. I'm really thankful to all of you. The topic you have given to us is research ethics and project writing. And it is a huge topic. And I would like to be fast and will try to complete my talk within 30 minutes. Go to the next slide, please. First of all, in this slide, I have talked about the objective, the purpose of higher education institutions. Earlier in 19th century and later on also, the purpose of higher education was character building and scientific temper. And you can see the Radhakrishnan Commission and Kothari Commission and all those talked of wisdom and knowledge, aims of the social order, love for higher values of life, training for leadership. These concepts were given in order to promote character building of students, and scientific temper. This was one phase. Later on, when we were students, we shifted from character building to career building. I remember in 1980s,
we talked of career building, and character building took a side seat. We shifted on career building, and I hope that you understand the meaning of career building. And this also, this concept was also, proposed by various commissions and committees. Nowadays, the present day mantra talks of teaching and research. And one thing that I want to tell you, that we as teachers, we always say that our main purpose is teaching. And we always ignore research. So nowadays, we must take it to our mind that our basic purpose is teaching and research. Both are equally important. And this thing has been advised and propagated by NAC, ranking agencies, and NEP 2020. Go to the next slide, please. If you look at this slide, there are 7 criteria of NAC, starting with curricular aspects, teaching, learning, research, infrastructure, student support, organizational management, and healthy practices. In this, if you look at 2nd and 3rd, teaching and learning, the marks given to teaching and learning in a university is 150, and the marks allocated to college is 280 out of 900. University, it has 1,000 words, 1,000 marks for all the 7 criteria, but out of that, 150 goes to teaching and learning. And in research, 250 goes to research. So if you look at this, you need to understand that research is more important in a university, more important than teaching and learning. If you go to college, you can see the in red ink, the marks allocated for teaching and learning is 280 out of 900. And for research, it is 120. So what I'm saying is that both are important with regard to higher education institutions. We must teach and we must do research. Go to the next slide, please. This is a suggestion by NAC, and this is also followed in ranking agencies. I'm sure you are aware of NIRF, and you are aware of Times Higher Education. You are aware of so many agencies which are there. Likewise, if you look at this slide, there are 8 items. It starts with diversity at local and local curriculum and pedagogy and policy. It starts with 1 and goes to 8, which is at the top. It is written here, build on sustained research and regular assessment by educational experts. I'm trying to focus that research is as much as important as is teaching and learning. This is what is my contention. Go to the next slide, please. If you think of today's classroom, especially after NEP 2020, you are going to consider these concepts. We need to define the teacher's identity.
teacher, as a researcher, you must think of that. As I said, that research is as important as teaching. And teaching has to be interdisciplinary and multidisciplinary. I'm sure you have seen the present syllabus of BA, where you can think of going for English honors, and as a subsidiary you can go for mathematics, and you can think of sociology. So it is interdisciplinary and multidisciplinary. With regard to project and research, it's given in the form of beyond classroom activity. A project is something which is given to the students as a part of beyond classroom activity. It cannot be done in the classroom. And that means that learning takes place outside the class. So the concept that whatever I teach in the class, the learners must learn, that is not important now. It's because of various reasons. Nowadays, the basic purpose of teaching is not imparting knowledge. Nowadays, knowledge is available. You can Google it, and you can watch videos, you can watch PPTs, you can watch images, and then also you can read books and articles. So knowledge is available in the form of video, PPT, images, and articles and books. So that is available. So what is it that is more important nowadays is that we are not supposed to give knowledge, rather train the students in how to achieve knowledge, how to get knowledge. There is a quotation that if you give a fish, this is a Chinese quotation, if you give a fish to somebody, it is good for 1 or 2 times meal. But if you teach fishing, that goes for your whole life. So as a teacher, we need to teach, we need to train students in fishing, not giving fish. So that's what I'm saying, that it's beyond classroom activity and learning takes place outside the class. These concepts are very important nowadays. Go to the next slide, please. What do we mean by research? Research is a umbrella term. Research is an umbrella term, and nowadays, if you have designed syllabus for BA, for any according to NEP, in that we have introduced a couple of things from this list. The list in red. I'm sure you have incorporated seminar presentation. This we are doing it in here in Aligarh. I'm sure you have doing it there also. Oral paper or PPT presentation. The students are, it is a semester system. The assignments is not necessarily written in 4 pages, 5 pages, 10 pages. Rather, they can prepare a PPT, they can make a video, they can make a video film also, and they can submit it as an assignment. So assignment is, it is multifaceted nowadays. Term paper, projects. Here I'm saying project.
And what I mean by project is that projects starts in BA nowadays. Right now, in the earlier lecture, I saw most of you were talking of about hypothesis and various concepts which are relevant in PhD, but it's also a part of project. We need to train our students in projects. What does it mean? It means that we have to master ourselves with regard to projects and research, because we have to teach students projects. So they can make documentaries, they can think of a dissertation, and so these are some of the things. And then I have gone for consultancy, collaboration, patent, internship, innovation. So the list in red is an extension or shapes of research in today's time. So you need to assess what are you doing in your institution. Are you involved into these things? So you need to think of that and be ready for that, because this BA, four-year BA, you may do an MA later on, and you may not also. You can directly go to PhD from BA. So this is a very important. So all this research is a part of BA level, BA level. On the right hand, with regard to ethics, I have listed some of the links and some of the items. For example, policy on plagiarism. There is a Gazette notification about plagiarism, and please note it down, all of you, that if your thesis is plagiarized more than 10% similarity, it is going to be punished. So you need to think of that. Somebody talked of MLA, APA, Chicago, and other styles. In literature, we follow MLA. In linguistics, we follow APA. In literature, we follow Chicago. And likewise, you have n number of style sheets. You need to think of that, and whatever is available in your place, you can follow that. Chemical research unit, intellectual property cell, consultancy document, MOUs, institutional ethics committee, institutional biosafety committee, innovation council, all these are to be maintained in your institution. You should check your website and think of these committees. You should make this happen in your institution. These are all very important for research and ethics, to follow ethics. They mention ethical aspects, in these documents. Go to the next slide, please. Somebody, our sir, the one who was talking about research in the earlier session, he talked of project writing. I have given a list here for writing synopsis or dissertation or project or thesis and such others. You can follow the following. Number one, background. Rationale. Background is, background. Rationale is reason. Why do you want to do this research?
Why do you want to do this project? Why do you want to why are you making this synopsis? And he also talked of research questions, and literature survey is all the more very important. He talked at length of methodology. He talked of tools, techniques, population, qualitative, quantitative. He talked all these. This is a part of methodology and an outline of chapters. So please keep it in mind that a thesis which is submitted in your institution must have rational, objective, research questions, literature survey, methodology, along with tentative chapters. This is a must. Nowadays, please keep it in your mind that people are rejecting thesis which does not have a literature survey. So that is, that is very important. And in your conclusion of the thesis, of the project, of the dissertation, you need to answer the research questions. You need to answer whether you have achieved the objective or not. So that is very important. And keep it in mind that whatever I'm talking of, I'm not only talking of PhD scholars, rather I'm talking of those who are doing their BA, who are doing their MA, and who are doing their MPhil and PhD. So project is so much important. Go to the next slide, please. You need to understand the, this you can think of as a teacher. Are we following Bloom's taxonomy? Do you have any idea about Bloom's taxonomy? I'm sure those who are from B.Ed, those who are from education, they know about Bloom's taxonomy, but it is very important. Anybody who could talk about this Bloom's taxonomy? Okay, you can Google it, and when you Google it, go to images. Okay, go to images, and you can look at it, and you can this will help you in designing questions also for your examination, for examinations. Earlier we talked of IQ, but nowadays we are talking of multiple intelligence, which talks of each one of us are intelligent. So you need to Google it also. You need to Google critical thinking also, alternative assessment, rubrics for assessment, project-based pedagogy, task-based pedagogy, portfolio making, what is collaborative research, and participatory teaching, learning, and research. And each one of us have a link on ResearchGate, Google Scholar, or Academia, and something else. So this slide is very important with regard to what you practice in your classroom. Are we practicing this in your classroom or not? We need to think that, because the time has changed. We are, we need to forget the traditional teaching and learning situation. As I said in the very beginning, that the world is full of knowledge. Knowledge is available at a tapping of
a key. It's available everywhere. You can Google anything. It's available on your mobile. So you need to exploit those knowledge which is available, in and around you, and then you need to think, what next? How am I going to teach this? Because knowledge is everywhere. So the intelligent learners, they will not come to your class if you are imparting knowledge in the class. You need to train them in fishing. They don't want fish. Go to the next slide, please. I hope it's final one. Thank you so much. Your questions, please. And we can, any question that you have. यदि आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, हाथ उठाएं। किसी का कोई प्रश्न है? सर से? ओके। Hello. Yes. Are you listen me? Can you listen me? Yeah, I can listen to you. Yes. But I can't see you. Some light should be there. Light. My question for this whole about this whole process of research. Can you? Okay. Can you can type the questions, please? You're not getting there. You're not getting it. I can. Yeah. It's better. Yeah. Yeah. So as you see that there are so much confusion of these days. People going for thesis work, particularly when they are adopting this area of academic. But so much confusion of research work. So it is, don't you think it's very difficult to discriminate between what is the genuine and what is canon? And particularly you say you have to talk about Google and also chat. I learned from my kids that they can just type the topic of their project and it gives them all the report. Yeah. So I think there must be something wrong with this entire. We have right from our own. But now we want we should devise something new, so that the students in the graduation level they can actually pinpoint whether going for the academy can be useful for them or they should thank you. Okay. I could not hear you so much, but what I could understand that see. First of all, thank you, Aftab. It's good to listen to you. We are classmates in our BA in Gaya College. Thank you so much. They have given a gazette notification with regard to plagiarism, and they say that if you have more than 10% similarity, you are going to be punished. So suppose your PhD, your dissertation, your project
if it is more than 10% similarity, it can be rejected. It is happening nowadays. So, that is very important. So what I'm saying that you have to follow the plagiarism test. Whatever you submit in the form of assignment, there is a facility in library. They go for plagiarism test. I have come to know that it's not there in Magadh University so far. If I'm wrong, you can correct me. But each thesis must be checked for plagiarism test by your university. So each thesis must be checked for plagiarism, and it should not be more than 10%. This is correct about thesis, dissertation, and project. What we are doing in Aligarh, we do this. The institution facilitates us. So that is very important. So it is not copy-paste. It's not copy-paste. It is original. I hope I could answer you. Yes, only the research should be held accountable or also the supervisor? Sorry. Say it again, please. Hello, Wilson. Yeah, say it again. I mean, I think the supervisor should also be held accountable. Or Yeah. No. The candidate has to submit the thesis. When it is typed, he will send it to the library for plagiarism check, and the library gives a report which tells that it should be less than 10%, and it is a detailed report. If it is 80%, 70%, it tells you why it is 80%. Then after that, you have to make it down. So there is a technique for that also. You have to put in lots of effort. Okay, thank you, sir. And we want to tell you that we have anti-plagiarism cell in our university, and we do consider the things so that the research would not be under plagiarism, any kind of plagiarism. So we have that cell, and we are working in that way. Thank you, and thank you for your learning lecture for us, and we have enlightened ourselves with your knowledge and your experience. And thank you so much, sir. You have been here and you enlightened us with your knowledge. Thank you so much. Thank you so much. A big round of applause, sir. Thank you. Now I would like to invite the chairperson of this session, Professor Vinay Kumar Sir, Dean, Faculty of Humanities, to say a few words. Sir. कलाकार में उपस्थित रहमत जी, विकास जी और हमारे बहुत सारे मित्रगण तथा हमारे छात्र और हमारी शोध के संबंध में कार्यशाला आज तीसरा दिन है और
बहुत सारे विश्लेषकों के विचारों से अवगत हुए हैं। शोध के दृष्टिकोण में विगत कई वर्षों में जो परिवर्तन मैंने देखा है, वही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के विकास में व्यक्ति की बौद्धिकता के विकास में शोध का बड़ा महत्व है। और शोध को मेरे विचार से रोजगार से ही इसका आधार व्यक्तिगत जिज्ञासा हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हाल फिलहाल के वर्षों में शोध हो रहे हैं। यदि उनसे प्राप्त निष्कर्षों पर हम ध्यान दें तो अधिकांश शोध प्रबंधों के परिणाम हमें शुरू उनकी गुणवत्ता में कमी नजर आती है। शोध के विभिन्न प्रारूपों के संबंध में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। अभी जो हमारे यहाँ शोध हो रहा है, कि मैं व्यक्तिगत रूप से विवरण मानता, शोध नहीं मानता, क्योंकि शोध का अर्थ होता है किसी नई चीज का प्रकटीकरण। और हम कहीं से कोई सामग्री लेते हैं, कहीं से कोई सामग्री लेते हैं, थोड़ी बहुत तुलना कर देते हैं और एक शोध प्रबंध तैयार कर सरकार के सामने नौकरी के लिए अपनी योग्यता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। शोध नहीं है, इससे देश का विकास नहीं होगा। देश के व्यक्ति के विकास के लिए शोध में कुछ न कुछ मौलिकता का तो मैं विशेष समय नहीं लूंगा, छात्रों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शोध को रोजगार से जोड़कर जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास न करें, नवीनता लाने का प्रयास करें और रोजगार से इसे मत जोड़ें कि मेरे पास इतना ही समय है, इसमें मैं यदि शोध प्रबंध लिख लेता हूँ, गाड़ी मिल जाती है। अगर इस मानसिकता के साथ काम किया जाएगा तो हमारे यहाँ शोध प्रबंध की गुणवत्ता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, शोध को समय की सीमा के अंतर्गत बांधते हुए ज्ञान की दृष्टि से और देश हित में इसीलिए तो गुणवत्ता भी प्रशंसनीय रहेगी और इसका परिणाम भी। हमारे शिक्षकों में कमी नहीं, कुछ कमियां हमारे विद्यार्थियों में भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं कि उनके निर्देशन में एक अच्छा शोध समाज के सामने आए। हाल फिलहाल के दिनों में ज्ञान के प्रति छात्रों में अभिरुचि की तरह से कमी दिखाई पड़ रही है, वह दुखद है।
कई शिक्षक हैं जो दिल लगा के काम करना चाहते हैं, अपने छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। बहुत सारे हमारे बीच एक लंबा अरसा हो गया हम लोग को पढ़ाते हुए, लेकिन क्या करें, हमारी बेबसी छात्रों की बेरुखी है और हमारी अपनी भी सीमाएं हैं। तो अपनी बात एक शेर के माध्यम से कहते हुए मैं समाप्त करता कि कोई इस अर्थ में लीजिए, उफ बेबसी के धोखे, बेरुखी के चश्मे, उफ बेबसी के धोखे, उफ बेरुखी के चकमे, हम दिल लगा कर रोए, वो दिल चुरा कर रोए, साजे जिंदगी पर जो गुनगुना के रोए, जैसे शबनम मोती लुटा के रोए। तो शिक्षकों और छात्रों के बीच में सुंदरता, नए ज्ञान की तलाश की रुचि, परिश्रम का जज्बा, से तेल निकालने की प्रवृत्ति की वृद्धि, ये सारे ऐसे तत्व को समाज में स्थापित करने में सहायक है, राष्ट्र में भी उनका अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। सारा संक्षेप रूप में आपने पूर्व के दोनों सत्रों का विश्लेषण बहुत ही सरल और प्रभावक भाषा में हमारे समक्ष रखा। मैं आपका अनेक अनेक धन्यवाद करती हूँ। अब हम इस तृतीय दिवस की कार्यशाला के तृतीय दिवस के तृतीय सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस तृतीय सत्र के लिए हमारे साथ आज जो विद्वान जुड़ रहे हैं वो है डॉक्टर सत्यव्रत सिंह सर। धन्यवाद। क्योंकि समय काफी हो गया है इसलिए हम लोग लगातार सत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं बिना अवरोध के, बिना ब्रेक के। तो तृतीय सत्र के जो हमारे वक्ता है वह है डॉक्टर सत्यव्रत सिंह सर। मैं आपको मंच पर सादर स्वागत पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय प्रोफेसर के लिए। साथ ही इस सत्र की अध्यक्षता जो करेंगे वो हमारे मगध विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा सर। मैं आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं अब आमंत्रित करती हूँ मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी सर से निवेदन करती हूँ कि ट्रेजरर इस कार्यशाला के कोषाध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी सर से निवेदन करती हूँ कि सर का खादी खादा और मोमेंटो के द्वारा स्वागत सम्मान करें। मैं समाजशास्त्र विभाग की वंदना जी से आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आए और हमारे आदरणीय सत्राध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा सर का स्वागत करें। सर, सत्राध्यक्ष के रूप में आपका विशेष सम्मान अपेक्षित है, इसलिए आपका सम्मान। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पिछले 2 दिनों में हमने विज्ञान और समाज शास्त्र के विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विद्वानों को सुना और उनके वक्तव्यों से लाभान्वित हुए हैं। आज इस कड़ी में मानविकी, लॉ और
शिक्षा शास्त्र, इन 3 विषयों से संबद्ध विषय विशेषज्ञों से हम आज अपने विचारों को साझा करेंगे, उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनके उद्बोधन को सुनेंगे। और इसी क्रम में आज हमारे बीच इस सत्र में डॉक्टर सत्यव्रत सिंह सर उपस्थित हैं। आप अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं और एक संक्षिप्त परिचय आपका यहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। Dr. Satyavrat Singh, retired professor and head Department of English and former Dean, Faculty of Humanities, T.N. Bhagalpur University, has to his credit about 40 years of teaching experience up to postgraduate level. Apart from having authored an interdisciplinary critical work entitled Hardy, Yeats, and Eliot Towards a Meaning of History, he has authored more than 30 research papers and has supervised 24 research scholars, leading to the award of doctoral degree. His association with various academic and administrative bodies of several universities and his contributions to seminar and conferences are significantly remarkable. So, we request you, sir, to please enlighten us with your experience and knowledge. Thank you, and please come. लाइट একটু লাইট थोड़ा इधर ठीक है सर। Honorable Chairman at the very outset, I thank the organizer of this workshop for having extended me an invitation to be present. I extend my heartfelt greetings to many persons, many of my colleagues who have known me. I also extend my heartiest greetings to all the participants, teachers, and research scholars present in this hall. The topic of this workshop is research, ethics, and proposal writing. Research is an umbrella term. There is no doubt. And research is, to me, an exercise. The training which I have particularly received from my supervisor is not the categorization or the classification which is in vogue, which is in practice. It was something like delving deep into the subject and drawing out something, just as the honeybee extract nectar from the flower. At that point of time, it did not used to be a time-bound program that it has to be completed in 2 years, it has to be completed in 3 years. One had to go on working and working and working until something crystallizes. At the time when I joined T.M. Bhagalpur University in the year 1975, there was only one teacher who was awarded PhD, Dr. R. And for that he had to work for 10 or 11 long years under the guidance of late Professor R.
But things change. And things change precisely because PhD was linked as a basic education at the entry point in the late 70s, early 80s. PhD was linked with time-bound promotions, and PhD was linked, and research papers are linked in different categories of promotion. It is a matter of great and grave concern that this thinking, this degree or research with different aspects of promotional avenues has degraded the value of it. That is why in many of the selection it is my personal experience that many candidates who appear for interview to be appointed as lecturers, they are not in a position, they have not been in a position to utter even 10 sentences based on their dissertation. They can't even tell the table of contents of it, what to say of the thesis at which they are. And therefore, in this workshop, when we are talking about ethics, everyone is talking of plagiarism. And plagiarism is the primary responsibility of the scholar. The scholar is held responsible. But in my view, plagiarism is not to be checked at the level of the scholar. Plagiarism has to be checked at the level of the supervisor and also at the level of the examiners. My supervisor or supervisors in my time in the early 80s, none of the supervisors used to suggest a topic. You come with a proposal. You come with multiple proposals. Come with the area of your interest. You discuss it. You go on changing. An agreement had to be reached. The suitability or non-suitability of the topic had to be discussed with the supervisor. But the topic was not imposed on the spot. It is only when the scholar selects the area of his interest, selects the subject, he can arrive at giving some meaningful research. Research which can be useful not only to the scholar for the rest of his life during his academic career, but also for the classroom and also for, because in course of PhD work, the quantum of labor that a scholar gives, that quantum of labor he cannot devote throughout his whole life, because it is that time, that period of time in which he has the potential to work, he has the potential to read, he has the potential to retain, and which he uses throughout his life and is able to guide the coming generation, guide his scholars in different areas. My second point is that we talk about research in humanities. In humanities,
reading a text, analyzing and interpreting a text, and considering a meaning, that is not only the purpose of research. In humanities, I feel, it is my experience, that research can be made meaningful only when it has its links with the process of creativity, with the process of no writer is a Robinson Crusoe. He can't be. Nor he is a Narcissus who either delights in isolation or is delighted only at looking at himself. Every writer is first of all the product of his society. He is an animal first. He can't negate the influence and the impact of his age. Therefore, to me, literature, meaningful research in humanities means and could be an interdisciplinary. Because only when you delve deep in interdisciplinary study, you can come to probe why a particular work of art has come into existence. You have to find out an answer. Why there was a Milton in the 17th century? Why not before the 17th century? Why was a Bacon, a Brown, only in the 17th century? Why is there no Bacon or Brown in the 19th century? Every creative mind is like a crucible in which social conditions, socio-economic, political, historical conditions are amalgamated. And this amalgamation produces a creative work of art, develops a literary sensibility. To understand that sensibility, to understand that change, is to understand literature, is to understand that particular. If we talk, my point of reference will primarily be English literature, and therefore I am focusing on the 17th. And why I began from the 17th century? Because 17th century is that particular and that strange age in the history of English literature, which after the 16th century, after the age of Shakespeare, it came with remarkable challenges. Shakespeare's age had no challenge. And if we have to rely on certain authorities, Keynes, for example, said the Elizabethan age was the golden age in the history of England, because that age was an age without challenge. And therefore, Shakespeare was able to produce gay comedies. No dramatist, no creative writer after the 17th century was able to produce a literature like that produced by Shakespeare. And therefore, Keynes says that it was only the Elizabethan age that produced a Shakespeare. The subsequent ages failed to produce a Shakespeare, and probably no age in human history will ever be able to produce. 17th century came with its own challenge. It came with the challenges of the rise and development of science. And when science started making greater impact on literature, challenges increased, and they increased in manifold terms. Bacon, for example, was advocating for science in an age that was still dominated by religion. Brown was advocating for religion
in an age that had started to be dominated by science. It produced a crisis, and the crisis, a response to that crisis, Milton had no option but to write an epic like The Paradise Lost, and he had to sum up by saying, "Just are the ways of God to man." Because being a Catholic, being an ardent believer in Christianity, he could not negate the authority. Although the subsequent ages will negate. So, if you delve in interdisciplinary studies, you have to take into consideration the socio-political, historical, religious beliefs. You have to take into consideration the ideas and thoughts of Hobbes and Locke. You have to take into consideration the Long Parliament. You have to take into consideration the first experimentation in the Commonwealth regime, of which John Milton himself was also a parliamentarian. So these considerations have to be taken into consideration, and that is why you see one type of literature in the 17th century, another type of literature in the 18th century. When, for example, you have Voltaire and Rousseau coming on the forefront, you have the French Revolution, you have the coming of the Romantics, and at the time of coming of the Romantics, you not only have to take into consideration the French Revolution, you also have to take into consideration that why the Romantics came with a clarion call. The clarion call to that nature is our friend, teacher, guide, philosopher, and whatnot. Precisely because what in modern term we call ecocriticism, the instinct to save nature. The process has started. It has its roots in the Romantics itself, because England at that point of time was making preparations for the Industrial Revolution to come. And as a mode of making the Industrial Revolution, welcome the Industrial Revolution, what had to be done was that the great meadows and the forests were being cleaned, and they were substituted by huge industry, gigantic industries, iron industry, coal mining districts, and so on and so forth. And that is why Wordsworth had no option but to plead for saving nature by making them a friend, a teacher, guide, a philosopher. Wordsworth went to the extent of personifying nature in the form of Lucy. And the death of Lucy by the end of each of the Lucy poems. What is it? It is death of nature itself in the 19th century, the process of slow and gradual death of nature. Science, we have to understand, researchers have to understand that why the shift of focus is so fast after the 20th century. There was no stagnation. Progress had to be understood. Science accelerated the pace of progress. Science accelerated the pace of progress. And in the 19th century itself, you don't only witness Romanticism, you also witness Victorianism. You witness utilitarianism. You witness the rise and emergence of communism. And all these are manifested. And the greatest change that affected the entire literary sensibility of the West and posed great challenges for the West was a historical
event that in the year 1859, there came a book authored by Darwin, The Origin of History, falsified the myth of the Bible. According to the Bible, the book of Genesis sums up the process of the creation of this world in 7 days. The first day, there was heaven and earth. By 7th day, the process of creation was completed. On the 7th day, God created man, made him put him in deep slumber, pulled one of his ribs, and created Eve, the first woman on the earth. And the process was complete. This was the faith on which Christianity had stood since the last 1,000 years. And with one stroke, Darwin falsified that myth. And that great event, that particular event, resulted into even Nietzsche crying on the streets of Germany, God is dead, and we have killed him. I have killed him. And the entire 20th century literature, therefore, becomes the literature of exploration of God. Finding an alternative. You have Yeats, you have Eliot, Lawrence, Joyce, Frost, each one trying to find out an alternative to God. Yeats came with the proposal that system has to be replaced by a system. God has to be replaced by God. Eliot came with the dictum, in the jubilance of the year came Christ the tiger. Yeats came with the dictum, a beast slouching towards Bethlehem to be born. Now this spirit, history, myth, anthropology, sociology, psychology, all had to be brought, all should be brought on one platform if the proper research in humanities has to be taken ahead. It has to be not on one platform. Or the respective ages, every age has a challenge of its own. Arnold Toynbee's great hypothesis is challenge and response. Every great challenge, if creatively responded, gives birth to a new differences, a new set of histories, a new set of values. In Blake's time, it was mercy, pity, peace, and love. Now, in the 20th, to be substituted. Utilitarianism had become the social ethics of the masses. This is the shift of focus. In the 18th century, up to the 19th century, the ethics of the masses was mercy, pity, peace, and love. In the 19th century, with the coming of utilitarianism, it had become utilitarianism, which had become the social ethics of the masses. What was its utilitarianism? It was an aggregate of individuals which looked only for utility and rejected time. Okay.
So in humanities, we also, only one point, we also have to understand that if humanities have to work creatively, it has to work in terms of bringing peace, culminating literature, finding out ways and means to attain peace. Because Hardy said, we pay 1,000 priests and pay them millions, but what we have got, nothing but poison gas. So different branches of learning have to be collaborated to see and understand humanities and achievement. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightenment. Now, I would call the next speaker of the technical session 4, Professor Sushil Dubey, sir, on the dais. So please, you are highly welcome, and please come on the dais. Professor Dr. Sushil Dubey is working as professor and head Department of Philosophy, coordinator PG Diploma in Vipassana and Yoga, Nav Nalanda Mahavihar, deemed to be University, Ministry of Culture, Government of India at Nalanda, Bihar. I cordially welcome you, sir, on behalf of the university and from the organizers of this workshop. Please give him a huge round of applause. And I would like to invite Dr. Sanjay Kumar, sir, from English department to felicitate sir with memento, Angavastra, and replica. Thank you, sir. Professor Sushil Dubey, sir, has the area of specialization as yoga philosophy and practices Indian philosophy, Indian value system, ethics and culture. And his area of competence is research and publication ethics, research analysis and administration, Sanskrit text-based studies, philosophy of religion, and Gandhian philosophy. Professor Dubey has, for his credit, publication of 14 books, 41 research papers, 10 radio talks on yoga, 1 television broadcast on Surya Namaskar to EduSet. He has delivered around 65 invited talks and resource person chairs valedictory speakers in national international programs and also has spoken on different capacities in around 125 online programs. Dr. Dubey has received Best Book Award on his book Kautilya Arthashastra from ABDP, honored certificates from MDNIY, New Delhi. Dr. Dubey has been figured in India Today, national magazines in 2008. And there are a lot of things onto his credit. He has been the expert member committee meeting and so many ICHR expert member of yoga in TKGL and lots more to his credit. So we invite him for his lecture. So please, you are most welcome, and I invite you to deliver your lecture. And
As so we have a short of time, so I request you to please. Very honorable chairperson of this session, and earlier to me, the learned speaker and all who are here, director and in charge of IPSC, holding the responsibility for organizing this 5-day, very important and significant exercise, workshop, and very energetic Dr. Shailendra Singh ji, who has been the organizing secretary, and all of you are who are the distinguished, I suppose, abilities, scholars, teachers who are here as well as who are at the live streaming. Welcome you. हिंदी में भी बोल देंगे, पहले अंग्रेजी में बोला गया था। सभी का स्वागत है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और ऐसा ही क्रम हम पूरे प्रेजेंटेशन में रखेंगे। प्रयास ये होगा कि जितनी बात कही गई है उसके आगे थोड़ा चलें। वैसे पता नहीं 2 दिन में कितना हुआ, फिर भी प्रयास करेंगे। I have been in the Indian Council of Philosophical Research under the Ministry of Education, who has been awarding research projects, fellowships, travel grants, seminar and conference for more than 11.5 years. Delivered, वैसे तो introduction दे ही दिया है, almost more than 7-8 states HRDCs में UGC बढ़ा। Let us move forward because time is short, and I think let the presentation be focused. Shall I start? No, I will. Share your. You're the host. Please enable. This is the presentation. We have been listening on this topic for, I think, the 3rd day and perhaps 4th. Not coming. So anyway, meanwhile, it's taking place, we should not stop. Ethics, research. वास्तव में एथिक्स की जरूरत पड़ती क्यों? नीति नैतिकता का सरल अर्थ हम सभी जानते हैं, बिना नेताओं के तो कुछ चलता नहीं। नेता, नीति शब्द आया है घी कुत्ते लगाकर ले जाने से, जो ले जाता है, इससे ये नीति शब्द संस्कृत से निकला हुआ है। So for that we have the leaders and leads, ethics and morality. Morality, our conscience, and ethics, which are the rules and codified. Character में भी act लगा हुआ है, how to act, how to behave, behavior and our or code of conduct. वैसे शैलेंद्र जी ने कहा था बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसीलिए ज्यादा परिश्रम करके बना के लाए, वही समस्या हुई। Anyway, we will not
research ethics particularly has been very important as we have been listening to the plagiarism and so far so many issues in our Indian Administrative Services. Also, we have been since 2013 paper on integrity. ये जिसकी हमने बात की ले जाना कैसा होना चाहिए, इंटीगर एकीकृत, यूनेस्को से लेकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब टू प्राइवेट जॉब में जाएंगे वहां पर एक इवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ अवर स्कूल्स एजुकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जिसमें एक्ट की बात होती है. हाउ वाज द एक्ट, हाउ वाज द बिहेवियर, हाउ वाज द स्टूडेंट. स्टूडेंट भी होता है जो स्टड्स जड़ा हुआ है विभिन्न मूल्य संस्कारों से जिसको जगाया गया शिक्षा के क्षेत्र में, और संस्कारों की जननी शिक्षा जिस कारण से हम है ये सारे संस्कार एथिक्स इन सभी चीजों को लेकर मॉरलिटी या नीति या ले जाने वाला जो हमारे जीवन में, व्यवहार में, चरित्र में, शिक्षा में, संस्कार में और ओवरऑल जो हमारे जीवन की एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट शैल बी द फाइंडिंग वेयर वी विल इवैल्यूएट एंड कैलकुलेट हाउ मच वी हैव कम एंड हाउ मच वी हैव डन. सारा ताना बाना एथिक्स से जुड़ा हुआ है. बहरहाल वी विल डिलीट अवर हियर short discussion of only 4 and 5 45 minutes perhaps. आप कर दीजिए प्रेजेंटेशन. Okay. It is connected. Fine. So this is topic. Nalanda, from where I am last 2.5 years. University for 700 years. Legacy that is recognized globally. इन चीजों की हम बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी में हम बात करेंगे. Integrity ethics, इस पर मैंने कहा professional ethics as laid by the University Grants Commission in our 2018 recruitment regulations, we are all knowing. NEP, what it is telling about structure of higher education, scientific misconduct, इसमें हम बात कर रहे हैं FFTP, and that GARP very recently UGC has brought out 2 monologues on this topic. Then we have this regulation plagiarism that we are knowing, and consortium for academic and research ethics. I was also the part of meeting sometimes when it was holding prior to the formation of CARE at the UGC. ये एक वेब जिसकी बात अर्लियर स्पीकर ने भी कहा था, हमको मध्य उसमें से लेकर के आना है. ये हमारा वेब जो एथिक्स का बनता है इस प्रकार से बनता है. वी हैव प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, साइंटिफिक मिसकंडक्ट, रिसर्च रेगुलेशंस, ethical policy and publication ethics, like this. Many times you must have been listening for last 2.5 days and maybe listening more up to the conclusion of this workshop and onward also. ORI, Office of Research Integrity, is situated in United States of America. We don't have such a thing for dealing with the plagiarism, but वहाँ पर यदि केस होता है तो they have already dealing with all such kind of things globally. Hope Committee on Publication Ethics, which first formed how to take the rules on research ethics by World Association of Medical Editors. Anyway, let us move forward. You will see all this. देखिए हमारे प्राचीन परंपरा में क्या मगध इतना प्राचीन स्वर्णिम इतिहास, प्राचीन परंपरा में एथिक्स की क्या बात है. Let's have a look on this. We have so many things from the very Vedic tradition, ऋतु, जिससे ऋतु बना है, जिससे सारा का सारा नैतिकता अर्थात कैसे चलना है सृष्टि को संचालित होता है. All from there onward, so the 14 अर्थशास्त्र इसका मत्स्य न्याय, लोक नीति, so many नीतिस we have had. एक बात है लेकिन कभी भी हमारे संस्कृत वालों ने अपना नाम नहीं लिखा ग्रंथ के लास्ट में. Who is contributing? Why? They were so humble. They didn't want to leave the karmic actions and its followings further. They have never mentioned. There were no glossary at the end of Sanskrit text. Anyway, let us move on. But that was our niti in education. तैतरी उपनिषद है जहाँ पूरा का पूरा शिक्षा वल्ली कन्वोकेशन के बारे में बताता है what person has to do in entire life. Anyway,
ये कुछ हमारे जो मॉडर्न टेक्स्ट निकले हुए हैं, थोड़ा पढ़ा भी कर लेते हैं। ये सब आधुनिक संदर्भ में हमारे जो नीति का प्याना बाना है, इन सब चीजों से चल रहा है। और मैंने कुछ दिखाया है कि अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एथिक्स, अभी दिस इज द डेफिनेशन मोस्ट कंटेम्परेरी, widely accepted, universally in Indian scenario as given by the University Council. Research is, there are three words which are of important: self-regulating, by and large self-regulating, self-policy process. टीचर सबको सिखाते हैं, शिक्षक जो हैं सबको सिखाते हैं, उनको कौन सिखाएगा? Who will teach to the teacher? So this is why it is self-regulating. This is why it is a self-policy. क्योंकि research, वो भी research कौन करवाएगा? Only we are the person who can be self, because शिक्षा से ही सारा का सारा कुछ चल रहा है, from the very birth to the end. इसीलिए संस्कार भी जो है, जन्म का जो गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक की बात है नहीं। So this is the GRP, Good Academic Research Practices by the University Grants Commission very recently, in the backdrop and followings of the mandatory research paper made compulsory to all PhD research scholars on research and publication ethics. So onward to that, what was the standard and accepted research material? First this book came, and from there it is there on field level. So onward to that, research in modern times, कुछ चीजें आती हैं novel, influential, relevant, integrity and highly interdependent. Research project हम बात कर रहे हैं, research is conducted in a culture to support honesty and integrity, higher standards of ethical practices and behavior, public trust. ये विश्वविद्यालय अच्छा है क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है? Whenever such kind of theories or such kind of जब ये बातें आती है, ये माइक मैंने वो नहीं क्या है, रहने दीजिए, सेटल ऑन सब की चर्चा होती है। और पोटेंशियल कटिंग एज रिसर्च, हम सारी बात डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट की डिजाइन पर, एथिक्स पर कर, फॉर व्हाट पर्पस? वी हैव ऑलरेडी हैव हैड सो मेनी रिसर्च, देयर हैज बीन अ डिस्कशन ऑन कि अभी 5-10 सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे स्पीकर करने कहा, कटिंग एज रिसर्च की बात कर रहे हैं। इज द इनोवेशन ऑन व्हाई एंड हाउ अ पर्सन थिंक्स अबाउट अप टू द एज, कटिंग एज समझते हैं, which is the edge, the optimum or ultimate point. Onward to that, we have to move. It is by the innovation only, the spirit to go further and beyond. This is only the place, शिक्षा या education या research, search तो हो ही गया है, तो री वर्ड लगा है, किस चीज के लिए लगा हुआ? This is for the cutting edge. और जब तक ये cutting edge research नहीं होती, जब तक फार्मेसी में हम मेडिसिन में जाते हैं, वहाँ यही हो रहा है कि अभी जो दवाई 5 दिन में काम करेगी, कोरोना का वैक्सीन आया तो ऑनवर्ड ही कितने दिन में काम करेगी। We are moving for the cutting edge research, which must be incentive and competition and successive evaluation. Moving onward to that, research ethics over the years, institutions, professional society बना कैसे, उसकी हमें नैतिकता की सेवाओं की बात की। संसद भवन में सारे हमारे regulations बनते हैं, we have 4 pillars of democracy. So conduct norms and principles to enhance the trust in research institutions, funders, producers, publishers, and products. और बात है कि what we can say a term about knowledge economy. We have the financial economy, so many economies, factors of economies or terms we can use economy. Knowledge economy. We are building the knowledge economy. As much as innovative, as much as in depth we are with our pursuits and dimensions we are covering of the knowledge. Knowledge का क्या मतलब? हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज की तो की बात आती है, बहुत ज्यादा उसमें झलकता दिखता है। हम ज्ञान की बात कहते हैं, संपन्न, जहां हमारी चेतना की इस तरह का अनुभव आ गया, चाहे वह सुख का हो, दुख का हो, किसी चीज के वैरायटीज ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभूति के साथ उसको ज्ञान कहा गया परंपरा। तो इसके लिए मगध विश्वविद्यालय का जो लोगो बना हुआ है, इसी ज्ञान को विकसित करता है।
research ethics and project writing. This is the circle: demand, quality, relevance, ownership, innovation and bonding through lifelong learning process. जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी भी आई है, तो विभाग ने लगता है बहुत बातें lifelong learning process बाकी और each and objective variable है anything सबसे पहले है. You will see onward in this also. So this is how this function moving. Value factors: personal, ethical, social, market and global. बात आती है ना हमके लिए कहाँ जाएगा रिसर्च, कहाँ implement. So like in modern scenario आगे चल के professionalism आने वाला है, that honesty, openness, self-reliability, fairness, credibility of science. 15वीं शताब्दी के onward जो science ने credibility बनाई है on these points, and that we are looking onward to replicate in the democracy of they are basically an object. ये हमारे बना हुआ है. This is writing rigor होना चाहिए, relevance, transparency, respect. इसको बोलते हैं टाइम otherwise. संबद्धता होनी चाहिए, उसमें impartiality या पारदर्शिता होनी चाहिए, संबद्धता सबको लेकर नैतिकता का ताना बाना बनता है रिसर्च प्रोजेक्ट राइटिंग में. इस पर हम आपका ध्यान चाहेंगे. इसका बेस है. हम बात करते हैं पीएचडी से लेकर हमारे रिसर्च आर्टिकल से लेकर के हम किसी प्रोजेक्ट की राइटिंग कर रहे हैं, हम ग्रेजुएट में जाना है, सेमिनार का पेपर बनाना है. We should have a clear head which makes its bottom. Hypothesis is always very broad, covering the broad area in a sense. It is having all pillars are sound so that we can make up our conclusion, and novelty is the top of this, covering all its block, reflections, experiment, observation, factual statement, and coherence and correlation, innovative originality, and usefulness. These are there, and onward to that, how our web is related. We have editor, re-editor. I am also the editor of, have been editor of 2 earlier journals, and currently also the editor of our university journal, Sri Nalanda. On the original name of the Nalanda University, it was Sri Nalanda. प्राचीन और सही नाम था जिसको नालंदा विश्वविद्यालय तो श्री नालंदा महाविद्यालय. Anyway, so lay readers and our communities, foundations, government, they are related with funding body, industry and society also, for which we are having the responsibility. But to that, our web is also we are moving. Seminar, conference, we are here at workshop. So symposia, colloquium, round table and workshop, we are here, and research. How it moves onward to this. हम किसी भी चीज को articulate करते हैं, keep the article doesn't mean that we are publishing only one journal on what we are articulating. So peer reviewing process to authorship, language presentation, plagiarism, defective, legal and publishing responsibility for publishing a paper. This is the process that we are all concerned with. Now coming to the ethics very fast. हमारा आयोग का बजट और टीचर आ रही है सब कहता है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. very cursorily look what it is talking about. Teachers and their responsibilities, students, colleges, authority, non-teaching guardians and society. तो ethics जब भी हम प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हैं, सोचते हैं ethics के बारे में सोचते हैं, they are all covered up. मैंने दे रखा है NEP what it is talking about. Just truly shape the future of our children, no doubt on this, and therefore the future of our nation because of this noblest role that the teacher in India was the most effective member of society. Only the very best कैसे होगा best करने से, and most learned become teachers. Society gave teachers or gurus what they needed. अभी भी teachers की सैलरी सबसे ज्यादा. जो बेस के इनिशियल शुरू होता है सबसे ज्यादा समय वो लगा शिक्षा को अर्जित करने में. एक बात सीधे लोग बजाते हैं. So their knowledge skills and ethics optimally to students. ये हमारा NEP कहता है about structure of higher education. कहता है तो समझते हैं only the data on all India survey higher education. बाकी सब data उनके पास भी होंगे. Have largest number of the university in the world and after listen child the largest number of institutions, number of
Teachers, students 3.85 crore in 1920 and around 24 crore in our school and middle education. सभा की प्रश्न उत्तर में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया। ये हमारे स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहां हम एथिक्स की बात कर रहे हैं कहां पर ये लागू होता हुआ इस काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी 1000 से ज्यादा इस प्रकार के सब्जेक्ट एनवायरनमेंट्स बहुत सारे सबसे ज्यादा आर्ट्स के विद्यार्थी और सबसे ज्यादा समस्या आर्ट्स में आ रही है कि रिसर्च कहां होगी, कैसे करें, कैसे प्रोजेक्ट डिजाइन करें, कैसे अप्रूवल और जॉब की प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटीज यही सबसे ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है। सबसे ज्यादा मार्क यही का पड़ी है विषय पर जहां ह्यूमैनिटी और मैनेजमेंट और टेक्निकल में लोग ज्यादा गए। मेरिट वाले स्टूडेंट्स के यही पर क्वालिटी स्टूडेंट्स की बात थी, समस्या यही पर ऊपर है। एनीवे एक कंपैरिजन दिया है और इसके आगे जो दिखाना चाह रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग क्लियरली तक पहुंच पाते हैं। आइडिया से का 0.59% का शेप पा रहा है पहुंचते ग्रेजुएशन से पीएचडी और वो यदि सही होंगे और प्रोफेशनल एथिक्स की बात होती है और प्रॉपर प्रोजेक्ट और रिसर्च का उनका ओरिएंटेशन होगा जिसकी बेस्ट की हम बात करें दे आर वही एथिक्स और नैतिकता समाज का निर्माण करेंगे। इसके द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। So this we should have in mind while dealing with this and such ethics and like again this is the web. दूसरा web is बातें लिखती है authorship। तो हमारा research ethics और project writing का ताना बाना होता है। Research misconduct की बात आती है इसमें तीन चीजें हैं verification, falsification और assessment के साथ test of data। Both things are together and they are further expanding. Falsification, fabrication, plagiarism, research integrity is wider area again as we discussed a lot and इसके बाद यहाँ से शुरू from interest आता है कि प्रोजेक्ट की डिजाइन होती है, रिसर्च पेपर की डिजाइन होती है, लॉबिंग होती है इसको लेकर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इसको आगे बढ़ाया जाए। ऑथरशिप की बात आती है इज द रियली ऑथर जिसको कॉन्ट्रीब्यूटर ओरिजिनली बहुत सारे प्लेटफॉर्म के केस और बारह के मैंने काफी किया था। आप यदि वेबसाइट देखेंगे तो लगे हुए हैं वहां पर ट्रांसक्रिप्शन कैसे डिफाइन इंटीग्रिटी आप संख्या में हम गणित की संख्या पे बात करें एक आधा नहीं 1.5 इंटीग्रल इज कंप्लीट हर एक की सीआर में लिखा जाता है लॉग विद गवर्नमेंट हो या इंटीग्रिटी कैसे इसको आजकल नीति वैकेंसी का उसमें बात है कि वैलिड वर्ड होता है साउंड नॉन डाउट तो क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताया शब्द में बड़ा अच्छा आपने कार्यक्रम हुआ द डेफिनेशन बाय यूजीसी and this is again the definition of plagiarism by the UGC and researcher by the UGC. They are talking about the research project all are the researcher this is exactly the researcher concerning refers to the person conducting academic and scientific research and education. Plagiarism की परिभाषा I will take another 5 minutes. I think not 45 minutes are so far. तो plagiarism पर ज्यादा बात मुझे लगता है काफी हो गई होगी नॉट बी इलैबोरेटेड नीचे दो रेफरेंस दिए हैं मैंने ऑफिस ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटी है there was a problem Lights so end हो गई lights I am leaving the plagiarism for further exposure हम सभी को पता है only concluding with plagiarism and then coming back to how and from where we can take the research project and grants इतना सारा हम एक्सरसाइज करेंगे एथिक्स का नैतिकता का रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बने क्या चीजें उसको कहाँ हम लेके जाएंगे कैसे उसको पैसे मिल सकते हैं या कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा so I will talk on that particular point perhaps other may not be talking about other resources plagiarism में only दो बातें पीएचडी लेवल पर है 4 लेवल्स हैं
एक है टीचर्स या जिन्होंने कर लिया है, वो 2 फर्दर 4 लेवल्स पे, 2 लेवल पे प्रेजेंट कोई देख सकते हैं। एनीवे, आई एम कमिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइनिंग की हम बात कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइनिंग या रिसर्च डिजाइनिंग या प्रोजेक्ट राइटिंग जब हम लिख लेते हैं या बना लेते हैं, एक्चुअली फ्रॉम वेयर वी कैन मूव विद दिस, कोई प्रोस्पेक्टिव भी तो होना चाहिए। हम एक सिनॉप्सिस बना रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू पीएचडी। So the way we are attending for varieties of way, like we have Ministry of Education, so all the councils are there which are providing the grants for various kinds of schemes. I will take only 2 minutes for discussing on that. And The arrow key. no, Okay. चलिए अब सम अप कर देते हैं। 2 मिनट 2 ही मिनट होता है, टेक्निकल चीज अपनी जगह पर है। हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर है ग्रांट प्रोवाइड करने का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में साइंस का CSIR है, एग्रीकल्चर में अलग काउंसिल्स है। वी हैव ऑलमोस्ट 16 such kind of body statutory. The arts and humanities we have ICSR, ICHR and ICPR, and one is at the Hyderabad, the legal institute. So all these councils are providing what kind of grant? ICPR, ICHR, and ICSR, they are providing grant. They are running other two kinds of grant. One was project grant, 10 lakh. The other 5 years. These are the real schemes. Perhaps we can focus upon after the training of this for taking grants or project writing. Whether we have really come out with something and it is applicable in a price, then we become markedly high value. The project grant आप देख सकते हैं from here and and publication भी हम कुछ छपवाना चाहते हैं। हमारा पेपर है वो है। They are giving 2,000 publication grant for our manuscript for publicizing it. For that purpose also we have to prepare a precise project. बात करें इस पर proper इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है various umbrella शब्द आई रिसर्च के लिए पहले various है and we have tribal affairs grants, national scholarship. Ministry of Culture is also provided for project as well as Tagore fellowship. Almost 100 spots are for all kinds of things for currently for the job or on these enrolled students. Either way, this is there. IIS Shimla is also providing teachers associate and visiting fellowships also. For that, you know, and foreign institutions we are rating also there. One more institution, Sastri Indian Canadian Institute, is giving all study opportunities in Canada. Everything is there now. At the last time, we can life. Yes. By this, that's what I'm like. Yeah, sound. Yeah, sound. Our things. दिखता ले जाना ले जा रहा है दिशा में ले जा रहा है वहां का और समय गया अच्छा होगा और satisfied at the end of life, at the end of the day सारे जो है
Om Shanti Shanti ke saath, I will end up here and thanking all the organizer, Honorable Vice Chancellor of the University, and all distinguished speakers here of this session that have been given the opportunity to speak. Thank you so much. Namaskar, Dhanyavad, Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सो मच सर। आपके इस व्याख्यान के लिए हम सभी आभारी हैं। यद्यपि समय का थोड़ा सा अभाव है, इस कारण से आपने अति संक्षेप में अपनी बातों को रखा है। आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, हम बहुत कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन समय के कारण थोड़ा सा कर रहे हैं। यद्यपि अब हमें लंच की क्रम में आगे बढ़ना था और सभी समाप्त करना था, लेकिन कुछ आवश्यक व्यवधान के कारण चूंकि षष्ठम सत्र में प्रोफेसर ए नटराजू सर को अपना व्याख्यान देना था, लेकिन उनकी फ्लाइट है 2 बजे। इस कारण से वो 2 बजे के बाद अपना व्याख्यान देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनके विशेष आग्रह पर उस व्याख्यान को हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से वह जुड़े हुए हैं काफी देर से, और उस क्रम में हम लोग उस व्याख्यान को यहाँ पर उनको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर ए नटराजू सर जुड़े हुए हैं। यस। मैं उनका संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। प्रोफेसर ए नटराजू इज हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड डीन स्कूल ऑफ फिलोसॉफिकल स्टडीज, Assam University, Silchar. He is also a member of Board of Research Studies, Assam University, as well as that of NEHU Shillong. He has around 24 published papers, 3 books to his credit. 6 research scholars have been awarded MPhil degree and 4 working under his supervision for the award of degree of PhD. He has contributed to research World 2 projects, one major with financial assistance from ICPR New Delhi and another minor under SAP UGC DRS1. इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए आदरणीय प्रोफेसर ए नटराजू सर को आपके व्याख्यान के लिए। Please unmute yourself. Thank you. Thank you very much. You can hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Thank you so much. Thank you so much. I can see the hall, you know. I thank the organizers, Honorable Vice Chancellor of the university, and then the organizing committee for this opportunity to speak to you. I wish I had come to your university and physically be there and then share my understanding on what research is and how to write a research project. But due to the schedules, you know, I'm sitting at an airport. It so happened there is some mix-up in understanding, and then, you know, in between you may hear an announcement that the flight is departing, but don't think that's not part of this class. That's only an airport announcement. I apologize for all that, the mess that I have created, but then so happy to be part of this workshop that's been organized. Very timely and very important measure these days. Thank you so much, sir. Thank you so much. Shailendra ji, I can go ahead now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, the point that I will take up next half an hour, 35 minutes,
is not bothering about which institution is providing funding and where to apply, because my earlier speaker was providing you information on that. I'll focus next 35 minutes just to take you all on the whole idea of when is it that our research proposal, project proposal, will be successful. When do we hit the success mark? What kind of research proposals get the funding nationally and internationally, and what do the screening committee looks for? I've been part of different committees at the UGC and then at AICTE as well. So when do we get the funding? That's a question that we will talk about next half an hour or so, and why our projects get rejected. More often than not, we write a project proposal and we wait for 6 months to a year and then hear that we are not getting the funding. When do we hit the success mark? That's the question. That's all. That was the only idea. We will deliberate next half an hour or so. The point is, it takes us back. The success of our proposal in any research takes us back to the question, what is research? That's more fundamental question. Is that the case? So what is research is more fundamental for all of us. And then what kind of research proposal will get us money? End of the day, our collaboration with research agencies at the national level and fellowships at the international level are all equally important. So let me take you for a few minutes on what this research is all about, because in the absence of that, our proposals won't attract attention. In the absence of an understanding, and number one, when do we fail to get funding? That's even equally important. Say for next 5 minutes, let us focus all those situations in which we will successfully fail. When are we going to fail? That's important. Forget about success in getting the funding for a project. When is it that we will fail in our project? What are those circumstances where we are failing? Once we can grasp into it, I believe funding should follow, funding should come. I believe I'm speaking to research scholars and younger assistant professors, associate professors who are more interested in undertaking the project. That's how, when do we fail? Let's say 1, 2, 3, 4. Had I been physically there, it could have been great interacting with you all, listening to you. When do we fail in our project proposal? Number one, we fail, and we fail on several reasons. One reason could be that we fail just because we want money, we want the funding, and we are least bothered about the research. We come across a advertisement asking for certain research areas, and we don't have expertise in those areas. I want funding. That's the only criteria. I want funding from a research agency, and somehow I write a proposal. We will fail. Nobody
nobody is going to like such proposals. Number two, we write proposals with shortest possible time. We come to know tomorrow is the last date. Tonight I submit a proposal. आज के रातों रात एक proposal बना लिए और morning तक submit कर लिए. हमारा failure rate बढ़ेगा. और मैं generally use करता हूँ कि हम successfully fail हो जाएंगे. रातों रात बना लिए, objectives बनाए, chapters बना दिए. जिस एरिया में हमारा कोई knowledge base नहीं है. So younger assistant professors से मेरा रिक्वेस्ट है एक 10 reasons लिखिए कि कब फंडिंग नहीं हो सकता है. When am I going to fail? That question needs to be answered, and then success would follow. Number 3, funding agency has certain objectives in mind. They are expecting something out of the researchers they want to fund, whether it could be UGC, ICPR, ICHR, ICCR, or any foreign agencies. Or if you are applying for a Fulbright or Shastri Indo-Canadian fellowships or DST projects, they have, what is it that the funding agency is expecting? And we rate a proposal just like that, whatever the objectives we have, without caring about what is it that the funding agency is expecting from us. Again, we will fail. We will also fail thinking that somebody in the research project committee in Delhi is known to me. I know a person who is part of the project proposal scrutiny committee. You will fail again. More often than not, if one is a good professor, one will not go by your name or friendship. They are not going to award. I will do some kind of canvassing or not. I will somehow get the funding. You will fail. So there are several ways of failure of not getting the funding. Let's get back. Now, the original theme, when do we get the funding? When is it that our research proposal will hit the benchmark and there is the funding for us? How is our proposal going to impress upon somebody in the committee? Committee generally has got 4 members, 5 members, a chairman of a committee. And let me tell you, a committee sees 60, 70 proposals on a day. Generally, when we sit in Delhi as part of different committees, you go across 60 to 70 proposals in a day. We were screening about 300 proposals in 2 days. Imagine the numbers of proposals that are there. So the committee doesn't have a great time to look at all the details of your project. Your project, starting from the title, starting from the first paragraph, starting from the objectives, has to somehow impress upon the committee members so that they read it further and further. Aapka, number 1, starting from title. Title impress करे कि आगे जाके next paragraph पढ़े. Next paragraph पढ़ने से और inquisitiveness हो कमिटी में कि ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद कमिटी मेंबर को ऐसा लगे कि एक बार हाइपोथेसिस पढ़ के देखते हैं, कंक्लूजन में किस तरफ जाना चाहता है. सो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ए रीडर all through your proposal, a 10-page, 12-page proposal is damn important, I believe. I believe some of you must have already done some projects, got some money. I did a 5-year UGC SAP project, Special Assistance Program project. It was around 55 lakhs or so.
And then recently we got a Center for Indian Knowledge Systems from AICT. Again, I wrote a proposal there. We got some 30-40 lakhs for that. And individual projects, of course, a good number of individual projects. In all these cases, my experience has been that, are you genuinely interested in pursuing a research? Question one. You just want to do a project, or are you spending your life on a particular question? Is that the case? Research का issue है कि कोई certain 2-3 questions को लेके हम हमारा संपर्क टूट गया है। Disconnected. He'll reconnect. Give 2 minutes. Yeah, he's back. Yeah. So you can hear me, Yes, sir. Shailendra? Yes, sir. Okay, great. Thank you. मेरे लिए information थी कि lunch is waiting for all of you. So, I don't want to stop you enjoying your lunch. Another 5 minutes to 10 minutes, I'll end up. I'll wind up in another 10 minutes. So, research as part of our life, as part of our academics, survey of literature tells how much time one has spent in grasping the particular area of research, whether it is sciences, social sciences, humanities, or physical sciences. Your survey of literature tells how much depth you have and how much time you have spent in your area. Objectives tell how much time. So the point that I'm trying to make is, have we given our whole attention, time, energies to a particular problem that we want to solve? Research project, funding, publications, publication ethics, all are secondary for that. What is primary is, are we living with a particular question which we want to solve? It's almost 3.5 decades. I started my philosophic career with a question and yet to find answers. So the botheration is, do you have a couple of questions which bother your mind, which you want to solve? You want to solve for yourself, for the society, and therefore there is a genuine living out of the problem. It's not that just we want to write a proposal or get the funding. It's that we are living with a certain problem. We want to solve the problem. We want to answer some of the difficulties of the society, whether it is in polity, economy, philosophy, mathematics. And therefore, there is a genuine digesting the problem by the individual faculty. So therefore, one is continuously reading the literature, one is continuously grasping the problem, and that gets reflected. This is what the point that I want to make. However much you want to canvas, or however much you want to impress upon the particular screening committee which awards project, that's not going to work. What works is our genuine commitment to research over a couple of decades of commitment to research, commitment to answering certain questions, and thereby contributing something. If there is that genuine
understanding, then objectives reflect your study over a decade. Survey of literature reflects, and your bibliography reflects, and the kind of sentences that you construct, everything reflects a kind of genuine hard work you have put in over the last decade or so. So end of the day, that impresses the committee. That's what, I was watching. All of you, I request to keep an eye on Indian knowledge systems announcements these days. AICTE is granting big. Indian knowledge systems, now there is a attention which is pulled back onto all the knowledge traditionally that belong to India. Could be architecture, could be Ayurveda, could be philosophy, could be Indian mathematics or Indian sciences and metallurgy, etc. In such cases, an in-depth understanding of a knowledge system is very important. It's not that, again, a footnote of my talk last 20 minutes has been, the footnote is that, are you genuinely interested in solving a problem that the society faces in any of the areas of the research that you are undertaking? Are you genuinely committed to reading the literature? Have we updated our knowledge within that? So it's that burning desire to be committed to a problem. So research questions के प्रति हमारी जो commitment है वो दिखता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट लाइन से पकड़ में आता है कि पर्टिकुलर रिसर्चर कितने कमिटेड है. सर्वे ऑफ लिटरेचर बताता है आपने सरफेस लेवल का नॉलेज है या आपका इन डेप्थ नॉलेज है. बिब्लियोग्राफी में पता चल जाता है, आपके टाइटल से पता चल जाता है. सो देयरफॉर फंडिंग इज द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड. We live and die with a particular research problem, digest it, sleep with the problem, that's how it is. And that gets reflected when you walk into an interview board for a promotion, that gets reflected for funding, that gets reflected. So therefore a genuine commitment to the area of research, that's my understanding after 3 decades of my experience in education field and teaching for more than 25 years and being part of several screening committees. That's what we look for. Something which hits us when we look at the proposal for 2 to 3 minutes. हर 3 से 5 मिनट में एक प्रपोजल का डिसीजन होता है कमिटीज में. 3 मिनट के अंदर में आपका प्रपोजल इंप्रेस करना है रीडर को. तो आप इमेजिन करिए कि आपका टाइटल कितना अट्रैक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स कितने अट्रैक्टिव है, और आपका रिसर्च में कॉन्टेम्परेनिटी क्या है, आप कौन से कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. आपका रिसर्च शायद 500 साल पहले अच्छा हो सकता था, आपका फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, बट नाउ. सो शैलेंद्र जी, आई एम एंडिंग. Shailendra ji, I'm ending. Sir, Magadh. voice is too deep, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Sir, thank you so very much. इतने एडवर्स कंडीशन में भी आपने हम लोगों को एड्रेस किया. Thank you so much. एयरपोर्ट से आपको काफी परेशानी हो रही है. Thank you so much from bottom of my heart. Thank you on behalf of the entire Magadh. Thank you so much, sir. Thank you so much. धन्यवाद. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite the chairperson of this session to please give us the concluding remarks. Professor Piyush Kamal Sinha. मैं 2 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा because we have far exceeded the time limit. अभी हम लोगों ने 3 विद्वानों को सुना, प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह, प्रोफेसर सुशील दुबे और ऑनलाइन मोड से हम लोगों ने प्रोफेसर ए नटराजू को सुना. एक 2 बातें मैं इनके विषय में कहना चाहूंगा. यद्यपि
इन लोगों के जो व्याख्यान रहे उन्होंने व्याख्यानों ने कई प्रश्नों को जन्म दिया। बहुत थॉट प्रोवोकिंग व्याख्यान रहे। कई प्रश्न मेरे मन में भी उमड़े, लेकिन समय की चूंकि सीमा है इसलिए मैं अपनी बातों को अत्यंत संक्षेप में कहना चाहूंगा। प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह के विषय में मैं कहूंगा कि आप जैसे विद्वान को जब भी मौका मिला मैं सुनना चाहूंगा। मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूं आपके व्याख्यान से, आपकी भाषा से। आपने जो व्याख्यान दिया उसमें जो तथ्यात्मक बातें की, और मैं तो कहूंगा कि सर मैं बीच बीच में मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं पोएट्री सुन रहा हूँ। आपकी भाषा जिस तरह की थी, बीच बीच में मुझे लगा कि मुझे कविता मैं तो कविता सुन रहा हूँ। सर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से यह एक्सप्लेन किया कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, रिसर्च के क्या रेलिवेंस है। और चूंकि मैं सोशल साइंस डिसिप्लिन से हूँ, इसलिए मुझे तो आपके व्याख्यान में थ्योरी ऑफ पॉजेशन के दर्शन हुए। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्चेस की बातें नजर आई। तो मैं यहाँ से निकल रहा होऊंगा, मैं अपने को अधिक प्रबुद्ध समझूंगा। सर आपके व्याख्यान ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है, और मैं समझता हूँ कि मेरी तरह सामने बैठे श्रोता भी आपके व्याख्यान से उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। दूसरे जो मेरे विद्वान शिक्षक प्रोफेसर सुशील दुबे ने एथिक्स की बात की, विशेषकर इन्होंने एथिक्स पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिलाया। उसके संबंध में मैं एक दो बातें शैलेंद्र जी की यदि अनुमति हो, हम लोग के पास समय की सीमा है, मैं आई वुड लाइक टू ऐड व्हाट प्रोफेसर सुशील दुबे हैज सेड। मैंने तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिख कर लाया था, लेकिन एक दो बातें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, खास करके यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनके लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक डायलेमा फेस करते हैं रिसर्च और एथिक्स में। रिसर्च और एथिक्स में किस तरह एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया जाता है, और कई बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है अपने रिसर्च के क्रम में कि कभी ऐसा कई बार हुआ है कि एथिक्स को हम सैक्रिफाइस करते हैं इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो आपकी बातें, प्रोफेसर सुशील दुबे की बातें भी बहुत ही प्रभाव उत्पादक थी। उन्होंने भी कई प्रश्न को जन्म दिया। यद्यपि मैं महसूस करता हूँ कि उन्हें अधिक समय मिलना चाहिए था। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में उनका प्रेजेंटेशन था, और मैं चाहूंगा आपसे अनुरोध करें, उनका जैसा शैलेंद्र जी बता रहे हैं शेयर किया जाए। अंत में प्रोफेसर ए नटराजू का व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिला ऑनलाइन माध्यम से। उन्होंने रिसर्च के विषय में बताया, रिसर्च प्रपोजल्स के विषय में बताया, फेलोशिप के विषय में उन्होंने कई बातें की, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही, यद्यपि उन्हें भी समय नहीं मिला, और मैं शैलेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि उसे भी शेयर करें आप उनके व्याख्यान को भी, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए या हम शिक्षकों के लिए भी जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें, फंडिंग कौन कौन सी एजेंसी है सो करती है। इन महत्वपूर्ण बातों पर वह कुछ कहना चाहते थे और विस्तार से बताना चाहते थे, जिन्हें हम शिक्षकों को भी जानना बहुत आवश्यक है। उन्होंने सर्वे ऑफ लिटरेचर पर बहुत विशेष बल दिया। सर्वे ऑफ लिटरेचर का फायदा यह है कि हम जो उस एरिया में जो रिसर्च गैप है उसको बड़ी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यदि हम अपने एरिया में रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब सही मायने में शायद हम रिसर्च कर सकते। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आप तीनों के व्याख्यान से मैं बहुत ही एनलाइटन फील कर रहा हूं, और मैं जब बाहर जा रहा हूँ तो मैं पहले से अधिक प्रबुद्ध स्वयं को महसूस कर रहा होऊंगा। आप लोग तीनों व्याख्यान के लिए तीनों विद्वानों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी विद्वानों का और आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रही हूँ।
प्रोफेसर्स का मैं सभी का संवेद रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं भोजनावकाश का समय हो चुका है। यद्यपि ये 40 मिनट का समय था, लेकिन इसको संक्षिप्त करते हुए 30 मिनट का हम लोग भोजनावकाश लेंगे। और पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में उसकी व्यवस्था है, सभी रिसर्च स्कॉलर्स वहां पर भोजन अपना ग्रहण कर सकते हैं और अध्यापकों के लिए यही पर व्यवस्था है। भोजनावकाश के बाद पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे और अग्रिम व्याख्यानों को हम सुनेंगे। तो जल्दी से